Yes. Very good evening, all of you, and welcome to Aakar Foundation. I am Professor Bhushan Chandwadkar, and today we are going to discuss about economics and Indian economy. We are having this orientation session for the first time as a YouTube live program from Aakar Foundation. Dear students, as you all know, that Indian economy happens to be a part of your General Studies Paper 3. It is a hybrid paper which contains, along with Indian economy, science and technology, security aspects, disaster preparedness, etc., of which a major chunk happens to be of Indian economy. Many students found economics to be a tough nut as usual, but if you ask me personally, it's the most easiest subject in the world. Why I'm saying so? Because it's the most pertinent subject in your and my life. Wherever it touches you and me, or wherever your and my life touches money, we are touching economics. And that's why, as I always used to say, that economics is something what we keep on learning. And we came into this planet by having some understanding of economy or some understanding of instinctual economics. As small kids, we also have some understanding of how to attract the attention of our mothers. That is what is the profit. That is what is the loss if our mother leaves us. So this is why I said that economics is the most easiest subject. But nevertheless, many students found it not to be like that. And hence, what is our task today is to first think up upon what is the UPSC syllabi with regard to Indian economy. What is the syllabic content with regard to Indian economy? Moreover, we are going to look upon into several aspects enunciated into the syllabus. हम वहां पे भी जाएंगे, ये भी देखेंगे कि सिलेबस के हर एक पॉइंट का मीनिंग क्या है और किन चैप्टर्स से उसके ताल्लुकात है, किन चैप्टर्स से उसके रिलेशंस रहेंगे. At the same time, we are also going to look upon into the previous year's questions. I have taken the latest question paper. We have borrowed several questions from the last mains paper, that means the 2021 mains paper, which has been just conducted. We have also borrowed for you several questions from the last prelims paper, which is again prelims 2021, which has been conducted in the month of June. So we will discuss several of those questions in the class today. And based on the collective understanding of the syllabic content, as well as the questions which have been enlisted over here, we will try to strategize upon what should be the basic way in which we should approach this paper.
as has been the case with many students, they found themselves quite perplexed regarding how to strategize this paper. As a matter of fact, it seems as if the syllabus is on the shorter side. Syllabus देख के ऐसा लगता है कि बहुत ही कम syllabus है और ऐसे लगता है कि it's like a cakewalk for many. But if you go into the fine nuances of analyzing the previous year's questions, here you come across with some confusion and you get bogged down by that confusion at times. क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि अरे सिलेबस में तो बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो पता नहीं कहाँ से सवाल पूछ लिए हैं जिनके रेफरेंसेस हमें शायद सिलेबस में वर्ड्स में ना मिले. Now this confusion may be because of the habit that human mind have, and students' mind have a habit of university level chasing the questions from the syllabic content. Now, because UPSC is quite a different exam in this regard, let me tell you that it's at the same time a very shorter side syllabus in verbatim, though there is a whole universe lying behind it. And that's why the first challenge, or let me put it in this way, why do UPSC aspirants many a times found economy to be a tough nut to crack? Because they end up being a miserable failure in decoding the syllabus. So what is most important thing, or the first challenge that we are going to encounter, is to decode the syllabus. So we will try our best to decode the syllabus here of both the mains and the prelims part of the syllabus. Then we will also link both of these syllabi with each other in order to come across a concrete understanding. Because without knowing what not to do, we can't zero down upon what to be done. And that is why हम कोशिश करेंगे कि दोनों को साथ में समझे, मेंस के सिलेबस से प्री की सिलेबस की तरफ चले और फिर एक कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग पे हम लोग आए कि what is the exact catchment area of this syllabus, what are the basic chapters that we are supposed to learn, and what are the areas of emphasis that we are supposed to give. So ये होने के बाद हमें पता चलेगा कि exactly हमारी टास्क कट आउट क्या है. Over and above that, हम लोग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं. ज्यादा पीछे जाने की चेष्टा हमने यहाँ नहीं की है, इसलिए लेटेस्ट सवाल हमने लिए हैं 2021 के. सो उसको हम डिस्कस करके यही के यही उस सिलेबस के साथ थोड़ा लिंकअप करने की कोशिश करेंगे कि हाउ द क्वेश्चंस कैन कम अक्रॉस टू यू. सो इन अ वे दिस सेशन, व्हाट आकार फाउंडेशन बिलीव्स, will come in handy for all those aspirants in India who are aspiring their future in civil services as a matter of strategizing for paper 3 Indian economy. So we hope that this session will come in very handy for you and it will really help you in your preparation. You should be on board with Aakar Foundation wherever you would found yourself to be lagging behind. We are more eager to help you. We are more happy to help you out. So we would like to accompany you in your journey of success. I think this session will come in handy for you. So let's pick up that. On your screens, dear students, is written economics orientation session. But let me tell you, even though the subject is economics, our focus or the catchment area of our focus happens to be this economy. भले ही economics हमारा subject है, लेकिन हमारे syllabus का जो main area है वो इंडियन इकोनॉमी है और इसीलिए हम लोग इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं. इवन इन आवर व्हाट इज कॉल्ड एज रेगुलर बैचेस हम वो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर फोकस करते हैं. सो वी नीड नॉट हैव टू लर्न मच ऑफ इकोनॉमिक्स ओवर हियर. हम लोग ज्यादा इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ने वाले. नो डाउट शुरुआती दौर में हमें इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग बेसिक कंसेप्ट्स we can't move on in Indian economy. The problem with this subject, somebody may call it a problem, I may call it an asset. The asset of this subject is that it keeps on changing day in day out. ये रोज बदलने वाला सब्जेक्ट है. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी जिंदगी के साथ हमारे साथ इवॉल्व होता है और इसीलिए ये सबसे इजी सब्जेक्ट हमारे लिए बन सकता है if we cultivate the habit of linking every now and then with this subject
in the current happenings of the era. तो अगर आप ये देखो तो इंडियन इकोनॉमी एक कंटिन्यूअसली हैपनिंग सब्जेक्ट है, इसमें रोज कुछ ना कुछ होते रहता है, इसमें कोई नई नई स्टैटिस्टिक्स आते रहती है, कुछ नए नए कंसेप्ट्स आते रहते हैं, या फिर कई सारे कंसेप्ट्स को आपको अलग अलग पुराने वाले कंसेप्ट से लिंक करना पड़ता है, और इसीलिए एवरी टाइम यू हैव टू कल्टिवेट अ न्यू कोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. दैट्स व्हाई एट टाइम्स इट मे be found to be a bit difficult, but let me tell you, it's not that difficult as we sometimes try to make out to be. और इसीलिए हमें ज्यादा फोकस इकोनॉमिक्स पे ना देते हुए इंडियन इकोनॉमी का फोकस रहेगा. Let it be very clear from the very onset. Let's move on now. Now let's focus a bit upon the syllabic content. Now before moving on to the syllabus, I have this preliminary examination syllabus for you. But let me take up this prelims syllabus later on. First, we will think about the main syllabus. Now, before moving on to the main syllabic content, it's my duty to tell you, as you or many of you may be already knowing this fact, that the approach towards the preparation of any paper of UPSC is mains cum pre. Even though in popular lingo, we can use it as a pre-cum mains approach, but it has to be characteristically mains cum pre approach. So first we have to think about the mains exam, and then we have to march upon to the pre-exam. Now there is a reason why I'm saying so, because the mains examination syllabus is a more explanatory syllabus, a more descriptive syllabus. It speaks more than it conceals as compared to the prelims syllabus. The prelims syllabus is basically a little bit more conciliatory. It is a very simplistic syllabus with a single line, as we will see a little while afterwards. It's a very succinct syllabus. It doesn't give you any holistic idea as to how much chapters you are supposed to study over here. It also doesn't tell you much about the latitude and the depth of the syllabi, which the main syllabus inherently focuses upon. So it's always better to start from the main syllabic content and then to link it with the prelim syllabic content. Then and only then we'll be in a better position to judge upon what are the real demands of our preparation, based on which will have a strategy of, we'll have properly strategized about. So the main syllabic content is on your screens over here. Let's take a look at this. The paper name is General Studies 3, Technology, Economic Development, Biodiversity, Environment, Security and Disaster Management, of which the words of our concern over today's session is economic development. So it's in simple terms written economic development over here. And we have given only those points related to economy on your screens. So what are we going to learn? So let's try to gather that from this syllabic content. The first point happens to be Indian economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development, and employment. Now it is clear optimally from this very first point that the focus should be on Indian economy, as I've started my lecture with. So our focus is not going to be economics per se. Our focus is going to be Indian economy. And that is why Indian economy and issues relating to planning. Now, what are the chapters that we are supposed to learn? Are the ones which are relating to planning. Then mobilization of resources is a part and parcel of the chapter of planning. And it is just spanned across the entire syllabus. It is not related to just the chapter of planning, even though the words are put adjacent to the word planning. But mobilization of resources is required across the economy, and it is a continuous exercise. So we will talk about mobilization of resources with regard to planning and the other aspects of the Indian economic management. Then the word is given over here is growth, development and employment. Now, whenever we speak of growth, concepts such as GDP, NDP, GNP comes to our mind. So whenever we speak of growth of any economy, it means the growth in GDP terms or in other
national income accounting statistics terms wherever we talk about growth. So it's a positive concept, it's a negative concept at times. So it talks about growth. Then development happens to be a qualitative concept, which talks about maturity in the economy. And employment, as we all know, is a very happening phenomenon always. Any country of India's size, in fact, there is only one country ahead of India in this regard, is China. But any country of India's size and complexity will encounter this problem of lack of employment. We are in the midst of a pandemic, and we all know that from the last 2 years, the pandemic has troubled the world economy like anything. And that is why the world economy has seen massive job losses, where the people have been unemployed. People are still unemployed. The Omicrons and the other variants coming on, and they are still making the markets uncertain. So producers are not daring to put in their investments so that few jobs could be created and then stocks could be rolled out for the market demand, simply because the market demand is not there. And that's why employment happens to be a problem. It is a perennial problem, though, whether we are having a pandemic or not. But in the scene of a pandemic, it becomes a very humongous problem. So they want us to study the employment scenario in India in its historical perspective, along with the current perspective as well. So it's the overall Indian economy, how it is planned. That goes without saying that we have to concentrate upon the history of planning. From where did it started? What are the stimuli of planning? What were they? What are going to be the new avenues of planning that we are now thinking about the future? All these things are going to be covered in this first part, which is the Indian economy, issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development, and employment. Now, what is the second line which is written over here? Is inclusive growth and issues arising out of it. Inclusive growth. Now, we have seen what is growth regarding the GDP figures. Now, growth as a neutral term at times could be exclusivist and at times it have to be inclusivist. But what should be the endeavor of mankind, or what should be the endeavor of the state? The endeavor of every state has to be making the growth as much inclusive as possible. हमें ये जो ग्रोथ होती है किसी भी इकोनॉमी में, जो बढ़ोतरी हमें दिखती है जीडीपी में, उसको ज्यादा से ज्यादा सर्वसमावेशी बनाना होगा, क्योंकि जब तक हम उसको सर्वसमावेशी नहीं बनाते तब तक देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नींव नहीं रखा जा सकता. And that is what is inclusive growth. That means simply that most of the social segments are needed to be beneficiaries of the growth which is manifested in the country. That is inclusivity. And what are the issues arising from it? Now, this makes the syllabus rather indefinite. Now, these are phrases like this, and issues arising from it. Now, you might have seen these kind of words used in all 4 GS papers for multifarious subjects. So it means simply nothing but the current affairs related with economics. So issues arising out of it is very much clear over here. It is linked with inclusiveness. If an economy, look, there can be only 2 ways in this regard. Either an economy will become inclusive or it will become exclusive. Exclusivist economy is not and cannot be called as a welfaristic economy. And an inclusivist economy is essentially called as a welfaristic economy. So या तो वो सर्वसमावेशी होगी या तो फिर आइलैंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी की बात होगी. कई लोगों के लिए विकास के कुछ मायने नहीं बनेंगे, बस चंद लोगों के लिए विकास के मायने बनेंगे, और ये हमें नहीं होने देना है. दैट इज व्हाट इज द इंक्लूसिव ग्रोथ. और इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट क्या हो सकते हैं कि अगर इंक्लूसिव ग्रोथ होती है तो क्या पॉजिटिविटीज दिखाई देंगे, और अगर इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होती तो क्या निगेटिविटीज दिखाई देंगे इंडियन इकोनॉमी में, या अगर आज तक की ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं रही है तो क्या निगेटिविटीज दिखाई दी है जो कि हमें अवॉइड करनी है.
और अगर आज तक की कुछ ग्रोथ पॉजिटिविटी दिखाई दी है तो वो क्या पॉजिटिविटीज है जिसको हमें बढ़ाना है. This is what we have to learn from this topic. So it has got an inherent link with the current affairs aspect. Of course, this entire subject of economics has got a great appeal of current affairs because, as I said in the beginning, this subject keeps on multiplying day in, day out. New concepts, new statistics, new analysis, new, I would say, assessments, new logics given by different organizations the world over, new indices coming over, differential positions, rankings of multiple nations on them. Based on this, we have to be completely updated, continuously updated. We have to be regular with our studies regarding updation of current affairs. So we have to continuously link it with the core syllabus, which is every paper syllabus has got two areas. One is the static one and the other is the dynamic one. The static syllabus is related to what are the core concepts in the subject, and the dynamic one is related to current affairs. Likewise, this is the same case in economics. So we have to focus more upon the assimilation of both the static and the dynamic ones, because the questions that are going to be asked in mains and prelims, we are going to look upon them very shortly. So they are going to be on the collective understanding of economy. So I'm re-emphasizing the very word collectivity always. Collective understanding has to be there. A concrete understanding has to be there. Merely knowing the concept here and there without an ability to link them to the phenomena which is happening in and around you is not going to solve the problem for us. It's not going to help you out. In order to succeed, you need to cultivate that knack. And that knack has to be cultivated from the very much codification of the syllabic content, what we are now doing as an exercise. So let's take a look on what are the other issues which are given into your main syllabus. They mention the word government budgeting. Now, do you really believe that merely these two words are solving problems for us? It simply goes without saying that the current affairs aspect is related to this as well. Now, as we all know, we are in the month of January now. On 1st of February, the country will witness the introduction of this country's another budget for the financial year 2022-23. So the penultimate year's budget, the current year's budget, the next year's budget, all these current affairs statistics have to be kept abreast. हमें इसके साथ continuously टच में रहना पड़ेगा. At the same time, भी बजट क्या होता है, जैसे मैंने कहा कोर सिलेबिक कंटेंट है. बजट क्या होता है, किस तरह से बजट को बनाया जाता है, बजट बनाता कौन है, बजट बनाने में किन किन अभिन्यासों की भूमिका है, कौन कौन से अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वित्त मंत्री जी, वित्त मंत्रालय की भूमिका क्या है, बजट पास कैसे किया जाता है एज अ लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज, बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, होते क्या क्या है उसमें चीजें. ये सारी चीजें हमें गवर्नमेंट बजटिंग में तो एज अ कोर पार्ट सीखनी है. बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट होते हैं. बजट के अलग अलग टाइप्स का मिक्सचर होता है, या फिर उसको कंपोज करने की अलग अलग कंपोजिशन एक्सरसाइजेस होती है. कौन सा बजट या किस तरह का बजट किस कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो सकता है. ऑल दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू मेक राउंड्स इन योर एंड माय माइंड while learning the government budgeting aspect or the government budgeting chapter, and coupling it with the current affairs, which is the latest budget or the latest one or two budgets. We have to cook up a dish for us, which is government budgeting. This is, and try to make it more delicious as much as if you could. This is government budgeting for us. So this is again the same, a core part of the syllabus, a static part and a dynamic one. Now let's move on to the other remaining three aspects. First, over here is given major crops and cropping patterns in various parts of the country. Now it talks about major crops and cropping patterns. Now, a very general idea could be gathered from this that this is related to somewhere the chapter of agriculture. Agriculture, as we all know, is the mainstay
of the Indian economy from time's eternity now, and it will remain as a mainstay for at least few decades from here onwards. So agriculture is a area which is worthy of focused upon, and agriculture is a very serious area regarding India's economic challenges. So it relates to this. So it talks about major crops and cropping patterns in various parts of the country. So what are we going to learn over here? In this chapter, we have to link it with our geography knowledge a bit. Even though no economics teacher is going to teach you geography in economics, but certainly you have to cultivate the knack of linking it with geography, because crops are grown in an ecology. Crops are sown in an ecology. They are harvested in an ecology. And as we all know that we are being troubled by the climate change scenario, the global warming fiasco. And that is why major crops and cropping patterns have underwent many changes through many challenges posited by this menace. So इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कि भाई इतना बड़ा देश है हमारा, इतनी बड़ी ज्योग्राफिकल विविधता है हमारे पास, और इस ज्योग्राफिकल विविधता के चलते कई सारे चैलेंजेस है क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स में। प्रचलित पैटर्न्स कौन कौन सी है, प्रचलित क्रॉप्स कौन कौन से है, किन एरियाज में कौन कौन से क्रॉप्स लिए जाते हैं, क्रॉपिंग सीजन्स में कौन से एरियाज डोमिनेंट रहते हैं, ये सारा हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। फिर आगे लिख देते हैं ये लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम्स। इरिगेशन एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है लिंक टू एग्रीकल्चर, बिकॉज एज वी ऑल नो दैट इंडियाज एग्रीकल्चर has a huge problem, which is its historical and geographical headache. And what is that? Most of our agriculture is dependent upon monsoon vagaries. So an irregular monsoon, as we are still witnessing, that look, we are in the midst of January now, and still in certain parts of the country, people are witnessing rains, unseasonal rains, hailstorms, and whatnot. And that is why the major crops and cropping patterns have been troubled by many ecological factors and geographical factors. So if you do not have sustainable irrigation assets with you, you are inviting the danger of exposing your agriculture to unseasonal rains or irregular monsoonal patterns. And if you are subjecting your agriculture to that may simply kill your agriculture sector, which is the case with India always. And that is why irrigation has been the biggest challenge. It is still a big challenge. We have to ensure optimal irrigation. So we are going to learn upon the irrigation policies hitherto, the irrigation potential of the country, how much of that was realized, how much of that is still lying unrealized, what are the losses of that unrealization, what are the benefits if you realized it, what are the aspects related to cost and time overruns. Then we are creeping into the chapter of infrastructure, because irrigation happens to be related to the chapter of infrastructure. It also talks about the irrigation systems, different types of irrigation systems. Few systems are micro irrigation, few are like local irrigation systems, ancient irrigation systems. So we will talk about this in the irrigation topic. Then the word comes storage. Now, as you all know, Indian agriculture has again a second, I would say, adjacent challenge in the agriculture, is that the problem of storage, because there is no dearth of fertile land in the country. We have perennial rivers across the Indian landmass, and we have around 60 to 70% directly, indirectly dependent population upon agriculture, and still huge amount of potential goes into waste. We have no problem of production now. We have no problem of per acreage crop yield to some extent also. But now the problem is that where to store. Year after year, we are having bumper crops, bumper harvests. But the problem lies in where to store. So the storage aspect has to be addressed, and there are so many issues related to that as well. Now, it goes without saying that all those issues related to this are not going to be enlisted over here by the UPSC.
Because what does the UPSC believes and what does it expects from us? It expects from us that a well-read person will better understand the nuances of this syllabus. So what is more important कि हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि reading between the lines का मतलब क्या, जो नहीं लिखा है उसमें भी सिलेबस को देख पाना, ये एक एबिलिटी कल्टीवेट होनी बहुत जरूरी हो जाती है, और इसलिए ये एक स्टोरेज वाला एस्पेक्ट भी हमें देखना है. Then it talks about transport and marketing. Now transport again is a big problem, and transport is a big service sector issue as well. So agricultural commodities have to reach to the markets, and the agricultural commodities, if they do not reach in time, many of them are perishable goods as well. So transportation plays a crucial role in linking them to the markets, which inherently gets linked with the remunerative prices that the farmers are getting. And that is what is transportation. So transportation is one such area where again the government have to spend a huge amount of money to pull in investments regarding assets of transportation. This is what we have to learn. Then it talks about marketing of agricultural produce. Now, as you all know, from the last year we have seen a nationwide farmers' protest culminating into withdrawal of the 3 controversial farm bills of farm laws by the government of India very recently. A part of those bills talked about the marketing aspects and the Agricultural Produce Marketing Committee, which is the APMC market. Now we know that Indian agriculture has grown into strengths across the years, but what we lack in is the capability of marketing and proper markets infrastructure, and then the problems associated with APMCs. So we are going to discuss that as well in terms of agriculture. So again, if you look at this as well, it has got a current affairs appeal. इसमें भी एक कोर चीजें एग्रीकल्चर से रिलेटेड पता होनी चाहिए और बचा हुआ करंट अफेयर्स जिसके साथ आपको जोड़ते आना चाहिए, ये आपकी नैक होनी चाहिए. तो दिस इज अबाउट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. फिर इन्होंने वो वर्ड यूज किए हैं जो मैंने आपको तभी भी बताए थे, issues and related constraints, e-technology in the aid of farmers. Now, wherever they speak this subjectively, issues and relative constraints, now they haven't listed any issue or constraint regarding this. So it is we who are supposed to codify those issues. Now, what are those issues? There could be n number of issues. There could be n number of issues regarding markets, transportation, storage systems. They are not adequate, they are not properly maintained, they are not qualitatively up to date. ये सारे उसके साथ लिंक्ड हुए इश्यूज है. कुछ रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स है हमारे पास, कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, कुछ पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स है, कई सारे कंस्ट्रेंट्स भी है. Now, e-technology in the aid of farmers. अब जैसे मार्केटिंग में हम लोगों ने क्या किया है कि आजकल ई-टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत हो रहा है. इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू आज हम और आप भी इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इसका इस्तेमाल काफी हो रहा है. तो फार्मिंग में भी आपको काफी हद तक आईसीटी का यूज करते हुए दिखाई देंगे लोग. तो ये ई टेक्नोलॉजी टू द एड ऑफ फार्मर्स है, बट उसमें भी कई सारे कंस्ट्रेंट्स है, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, कई सारे कंस्ट्रेंट्स है. नाउ लेट्स मूव ऑन विद द रेस्ट ऑफ द सिलेबस कंटेंट. इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज. नाउ अगेन इसी से पता चलता है कि ये भी रिलेटेड टू चैप्टर ऑफ एग्रीकल्चर है, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द फार्म सब्सिडीज. ठीक है ना. नाउ इससे भी इश्यूज रिलेटेड बोल दिया है. Now there are n number of issues related to this. They have listed direct and indirect farm subsidies. Now we know that the farm subsidy issues are not just national ramification issues. They have become issues which are having international ramifications. And that's why local governments, the state governments and the national governments, as well as the international regimes, are worrisome about the subsidies mounting in their countries. So many countries are low subsidy countries, many countries are high subsidy countries, and there has been of late a debate upon whether to have subsidies at all or not. So all those issues regarding the favor aspects or the disfavor aspects, ये सारी चीजें आ जाएगी आपकी सब्सिडीज के साथ. फिर आपने ये वर्ड पूरे साल भर में बहुत सुना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी की बात, क्योंकि आज भी फार्मर्स अगर कोई चीज सरकार से
वेहेमेंटली डिमांड कर रहे हैं, तो वो एमएसपी है। तो एमएसपी क्या होती है, एमएसपी कौन देता है, एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो कैसे होनी चाहिए, सरकार का क्या इस बारे में ओपिनियन है, सरकार क्या कहना चाहती है, फार्मर्स का क्या कहना है, अर्थशास्त्री क्या बोलते हैं, कृषि के वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, ऑल ऑफ दैट हैज टू बी स्ट्रीमलाइंड। तो आपके कई सारे ओपिनियंस को आपको इसमें स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि द कॉइन हैज टू साइड्स, इट्स अ मल्टी फैसेटेड एस्पेक्ट। सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, इसका इशू हमें स्टडी करने को मिलेगा। देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, राशन की दुकान जिसको हम बोलते हैं। इफ यू नो दैट एवर सिंस वी हैव हैड अ लॉकडाउन, नेशनवाइड लॉकडाउन इन द कंट्री फ्रॉम मार्च 2020, we are having this Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana rolled out by the central government. Now, how is it going to be, or how is it implemented? It is getting implemented through the PDS shops, lakhs of PDF shops across the country which are spanned. ये जो राशन की दुकानें, इनके थ्रू ये स्कीम चल रही है। फिर क्या है ये पीडीएस, इसके क्या पॉजिटिविटीज है, क्या निगेटिविटीज है, यूनिवर्सलाइजेशन का क्या प्रॉब्लम है, यही सारी चीजें देखो। पीडीएस सिस्टम के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की है कि भाई पीडीएस सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इससे फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर हो रही है या हो रही है कि नहीं हो रही है, ऑल ऑफ दैट हैज टू बी टेकन ओवर। देन फंक्शनिंग लिमिटेशंस, हाउ द पीडीएस सिस्टम फंक्शंस, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द पीडीएस सिस्टम, what to do with the revamping of the PDS system, or what should we do to revamp the PDS system. Then the issues of buffer stocks and the food security aspect. Now, buffer stocks, again, as I said, regarding subsidies, likewise, the buffer stocks issue is also one of the core elements of the WTO negotiations, and hence international communities are expressing their concerns regarding buffer stocking by the member nations and the trade distortionary impact that it could have, or it is having perhaps, upon the movement of agricultural goods and commodities the world over, hence hampering globalization. तो ऐसे कई सारे कॉम्प्लेक्स मुद्दे इसमें आ जाते हैं। तो इसीलिए पीडीएस को रिवैम्प करने के लिए हमने क्या किया करना चाहिए, बफर स्टॉक्स में फिर ये जुड़ जाता है आपके स्टोरेज वाले वर्ड के साथ जो हम ऊपर देख चुके हैं। फिर आगे ये बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। ना, इंडिया के सामने फूड सिक्योरिटी का चैलेंज हरदम बना रहता है, इवन दो ऊपर अभी हमने कहा था कि इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वी हैव grown into strength now, so there is no dearth of production, but we are still lacking in food security because in global hunger index India fared badly. So global hunger index maybe or may not be accepted by the governments, but it speaks about the truth that India is a country having more than 1.3 billion people now, and there are a huge amount of people who are going empty belly day in day out. So they are compelled to sleep without meals. They do not get 2 square meals across. And that is where the food security aspect has to be catered to. A country having 60% of its population embroiled into agriculture is not in a situation to ensure 2 square meals for its round-the-clock population. It's a pity as such. और इसीलिए अगर आप ये देखो तो ये फूड सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट बहुत बड़ा एस्पेक्ट है हमारे लिए। इसका रीजन सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं हो सकता, तो ये कई सारे और एस्पेक्ट्स के साथ भी जुड़ जाता है। नेवरदलेस इट इज मेंशन्ड इन दिस टॉपिक। फिर आगे टेक्नोलॉजी मिशंस की बात की है, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग की बात हो रही है ना। टेक्नोलॉजी मिशंस का मतलब जैसे ऊपर हमने ये जो ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स देखी है, वैसे ही एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी in the support of farmers regarding improved tools and utensils, ये अगर आप देखो तो इसकी सहायता से हमें कृषि में काफी सारे आमूलचूल बदलाव लाने होंगे, या हमने कई सारे बदलाव की शुरुआत ऑलरेडी कर भी दी है और उसके काफी अच्छे परिणाम दिखाई भी दिए हैं। तो इन सब चीजों को अगर आप देखो तो इट टॉक्स अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज दिस टेक्नोलॉजी मिशंस, इसकी भी स्टडी हमें करनी पड़ेगी। देन इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, as we all know that India is number 1 in the cattle wealth in the world,
and that is why there is a healthy ecology, or I would say there is a healthy possibility of an ecology to be built up around this animal rearing saga. और इसलिए जो मवेशियों से रिलेटेड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है उस पर फोकस करने की बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें कई सारा जो हमारा पोटेंशियल है वो अभी भी नेशनली अनटैप्ड माना जाता है। तो इसको अगर हम देखें तो इसके बारे में भी फार्मिंग कम्युनिटी में काफी सारी चीजें करने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपको भारत के पॉलिटिकल फार्मिंग लैंडस्केप में काफी मूलभूत बदलाव करने की संभावना है। स्पेशली इंडियाज पॉवर्टी इज एसोसिएटेड विद रूरल पॉवर्टी, and rural poverty is associated with poverty of agriculture. So we can say that India's poverty is more associated with agricultural poverty. So the $1,000,000 question over here comes to my mind as to how to reduce the poverty in agriculture in order to reduce the poverty in India. Now there are ways in which to do so. One best way to do so is to couple the traditional agriculture along with the economics of animal rearing, which we are vehemently pushing forward for. And that is what we are going to learn over here. अब तक के भारत सरकार ने एनिमल रियरिंग के लिए क्या किया, अभी राज्य सरकारें इसके लिए क्या कर रही है, और अभी भारत सरकार एनिमल रियरिंग में आगे क्या करने जा रहा है, ये कई सारी चीजें हमें यहाँ पे लर्न करनी होगी। तो उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स होगी। देखो हर टॉपिक में हमें क्या दिखाई दे रहा है, हर टॉपिक में एक स्टैटिक पोर्शन दिखाई दे रहा है, एक डायनामिक पोर्शन दिखाई दे रहा है। दोनों की सिंक्रनी बना के चलना होगा, कदम मिला के चलना होगा। अगर अटल जी की कविता की भाषा में मैं बोलना चाहूँ तो कदम मिला के चलना होगा, मतलब यहाँ पे सिलेबस मिला के चलना होगा, सिलेबस से करंट अफेयर्स मिला के चलना होगा। सो दैट्स अ गुड सिचुएशन टू बी इन। तभी जाके इकोनॉमिक्स का ये टफ नट क्रैक आसानी से हो सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स आर गिवन इन फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। नाउ अगेन एज आई सेड, what we have to ensure is that to reduce the poverty in agriculture, that means to raise the levels of incomes of those people who are associated with agriculture. One way to do so is animal rearing. Another way to do so is expanding the food processing industry in India. Now this government and the last few governments have been quite keen on doing it. They have been rolling out schemes and embellishments for sectors or startups so that they could end up becoming good initiators in this regard. Food processing industry हमारे देश में एक सनराइज इंडस्ट्री मानी जा रही है, और इसीलिए उसमें काफी सारा स्कोप है एग्रीकल्चरल रिजुविनेशन का भी और पॉवर्टी रिडक्शन का भी। और इसीलिए उसको हमें देखना है कि अब तक का स्टेटस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देश में क्या रहा है, वर्तमान में क्या चल रहा है, और आगे हम जाके क्या करना पसंद करेंगे या हमें करना चाहिए। Then it talks about the scope and significance, scope of food processing industry and significance. Then location, है ना। देखो हर इंडस्ट्री में what is the most crucial factor if you want that industry to become profit making? One crucial factor out of many happens to be the location of the industry. You cannot have a garage on the 3rd or the 4th floor of a building which do not have a ladder, and that's why the location is faulty. Likewise, if you talk about food processing industry, you have to talk about its location, because you cannot have raw material supply in the village areas and production in the urban areas, so there will be a gap of transportation. तो आपको ये सोचना पड़ेगा। तो ऐसे चीजों के बारे में हमें यहाँ पे लर्न करना मिलेगा कि ये क्या सिग्निफिकेंस है इसका लोकेशन क्या होना चाहिए। फिर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स की बात हो रही है। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स, नाउ वी ऑल नो दैट फॉर एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी टू बी अंडरवे देयर आर सप्लाई चेन्स, और फॉर दैट मैटर देयर आर, जैसे किसी भी ऑफिस में एक बैक ऑफिस और एक फ्रंट ऑफिस होता है, वैसे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है जिसमें अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स होती है। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है, डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स में आप उसकी प्रोडक्शन फेज के बारे में बात करते हो, और अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स में जब आप उसके सेल फेज की बात होती है कि उसको कैसे मार्केट में फ्लोट किया जाए, तो ये आप बात करते हो। सो इट टॉक्स अबाउट द सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन वन वे, है ना। नाउ व्हाट हैज बीन डिसरप्टेड द वर्ल्ड ओवर करंटली
are the supply chains. You might have seen our Prime Minister many a times uttering these phrases of supply chain management and challenges regarding re-establishment of those supply chains or restoring those supply chains back, what has been quite disturbed by the COVID pandemic the world over. On the international fora, our Prime Minister speak about this. On the national fora, umpteen number of times he have spoken about this. अगर आप ये देखो तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट की इश्यूज है. इसमें आपको वो सारे सप्लाई चेन्स, रॉ मटेरियल्स, प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, देन द टैरिफ एस्पेक्ट्स, वो सारी चीजें इसमें आपको देखनी पड़ेगी. ये हो गया आपका सिलेबस का वो वाला पॉइंट. आगे चलते हैं, हमें क्या दिखता है इसमें. लेट्स फोकस नाउ. लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया. लैंड रिफॉर्म्स की अगर आप बात करें, अभी पिछले 2-3 टॉपिक्स हमें ऐसे दिख रहे हैं कि जो इनहेरेंटली एग्रीकल्चर इस टॉपिक से लिंक हो रहे हैं या इस चैप्टर से लिंक हो रहे हैं. बट इफ यू रिमेंबर, आपको यूपीएससी ने कहीं पे भी या सिलेबस में ऐसा नहीं दिया है कि भाई चैप्टर नंबर 1 to 20 पढ़ लो और हो गया आपका काम. They have not given you syllabus in chapters as such. They have given you syllabus in points of discrete nature. So chapters तो हमें निकालने पड़ेंगे उसमें से. So we will try our best to do so in this session itself, so that you could be better equipped with the strategy for this subject. So land reforms की बात करते हैं, we know that again this has got a great relationship with Indian agriculture, because land is the basic asset of agriculture. Without land there can be no agriculture. Of course, now people are thinking about terrace farming also, but even in that case you require soil which relates to land. So without land there could be no agriculture. So land reforms has been a greater area of influence in India ever since the pre-independence era also. As we all know that during the time of Mahatma Gandhi only, few land reforms initiatives were launched by the national movement people. If you all know the movement of Bhudan by Vinoba Bhave, that is the land reform movement. But of course, post-independence, officially and deliberately, efforts are being made for land reforms in India. Now, few efforts are being already made, few are still underway, few yielded good results, few ended in catastrophe. So all the successes and failures associated regarding land reforms in India, what exactly the idea of land reform is, how it is related to agriculture, what impact it will have upon the ownership pattern, etc., etc. All this has to be learnt in this land reforms in India aspect. Now, the very next word is given over here is effects of liberalization on the economy, changes in industrial policy, and their effects on industrial growth. Now, it talks about the very word liberalization, then industrial policy, and then finally industrial growth. These are the key words. Effects of liberalization. As we all know, the policy of LPG, liberalization, privatization, globalization. Now, LPG policy, or rather in simple terms, if we talk about globalization only, the concept of globalization ever since its advent after the end of the Second World War in the world has been a revolutionary concept. Few countries have accepted it right from the word go. Few countries were late entrants to that. India of late joined the bandwagon and entered into globalization. So globalization along with liberalization and privatization have had and is having a great influence upon the economic management of the world. And hence this topic talks about liberalization and its effect upon the economy. Of course, when we talk about effects, we have to talk about both positive and negative impact of liberalization. There have been both these kind of impacts of liberalization. Some are still going on. So it's not like hunky-dory, everything is a rosy picture. There is a negative side to globalization also. There is a positive side to globalization also. Both have to be focused upon. Now, changes in industrial policy is linked with this, because the world industrial policies have seen rapid changes in themselves ever since the advent of globalization. And that's why, as a natural matter, natural fact, it is getting linked over here. So industrial policy, even in India, we have got multiple industrial policy resolutions till now, and their effects on the industrial growth. Now, definitely, when we talk about industrial growth,
It has got the effect of both the policy of liberalization the world has adopted and the industrial policies adopted by each individual nation for its domestic economic management. ये सब हमें देखना है इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन में। तो ये एक किस्म का थोड़ा सा इंटरनेशनल एस्पेक्ट है। अब इसमें भी एज अ मैटर ऑफ कंसेप्ट अगर हम समझना चाहेंगे तो कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन समझेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन समझेंगे, और उसके बाद उसका इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एंड डोमेस्टिक करंट अफेयर्स से उसको हमें लिंक करना पड़ेगा। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट। Then the next chapter comes across is infrastructure, which is again a very good chapter. It covers energy, ports, roads, airports, railways, and this very word etc. means so many things now. Infrastructure is a very key element of any country's economic development potential. Any country who aspires to be a country of superpower stature, like India do, or any country which wants rapid economic growth and development, needs to keep itself well equipped with infrastructure readiness. Countries like India always found itself to be in a bit of a lingo over here. Infrastructurally, we lag quite behind in economy, and hence many a times our poor infrastructure doesn't allow us to move much ahead than the potential that we are really capable of adorning. And that's why हमें कभी-कभी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक इम्पेडिमेंट की तरह, एक कांटे की तरह चुभता है और अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जो दिए हुए चीज तो है ही, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज की तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक्सेट्रा में कई सारे और है। कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अदर देन द वंस व्हिच हैव बीन मेंशन्ड, वो कई सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। अपने आप में एक बहुत ही डायनामिक चैप्टर है वापस से, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें जो करंट अफेयर्स में रोज होती रहती है उसको आपको लिंक करना पड़ेगा। देन फाइनली दे टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। तो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स जो है, कई सारे इन्वेस्टमेंट मॉडल्स दुनिया में होते हैं। कुछ मॉडल्स नेशनली टेनेबल होते हैं, कुछ इंटरनेशनली टेनेबल होते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव मॉडल्स ऑफ मल्टीपल नेशंस होते हैं। हर मॉडल की अपनी अपनी कुछ ना कुछ खासियत है, कुछ ना कुछ खामियां हैं। They have all got few drawbacks. They have all got few pleasantries to offer. And those investment models have to be studied in detail. What is the most important word over here is investment. The biggest challenge that every country in the world encounters today is from where the investment is going to come into its economy. It completely wants its economy to be on a faster growth pedestal, but it is struggling with investments because domestic investments are dried up because of lockdowns. International investments are hard to come by, and there is no third way to raise investments. So we are slowing down on the investment front. So what are the investment models which have been used hitherto? What are the investment models which the world have utilized hitherto? What are the best investment models available in the world? And what is the one or the composition of the many which India at the moment wants to keep about itself or wants to adopt or has to adopt? ये कई सारी चीजें हमें investment models में देखने को मिलती है। Now this is, dear friends, in a nutshell the syllabus of mains Indian economy. अब हम आगे चलते हैं और हम जाएंगे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी ये बता ही चुका हूं मैं, बट मेंस के सिलेबस में हम एग्जैक्टली कौन से चैप्टर्स को पढ़ेंगे उसको देखना तो है ही हमें, बट उससे पहले हम प्रीलिम्स के सिलेबस का एक बार थोड़ा सा ओवरलुक कर ले उसको और इससे लिंक करें मेंस के सिलेबस को। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस। दिस इज द प्रीलिम्स सिलेबस ऑन योर स्क्रीन, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, और प्रीलिम्स का ये जीएस पेपर 1 का सिलेबस है। हमारे लिए व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस इज फर्स्ट करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, बिकॉज हमें पता है कि इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट डायनामिक सब्जेक्ट perhaps of all the subjects that offer in GS. Along with geography, along with polity, it becomes one of the most dynamic subjects. So inherently, even in prelims, it has got a link with current affairs. Many times you might have witnessed that current affairs came across around more than 20 to 25 questions in the prelims list. 100 में से लगभग 20 से 25 सवाल करंट अफेयर्स के आ जाते हैं
और उनमें से एक साइजेबल सवाल इकोनॉमिक्स के भी रहते हैं, और इसीलिए हमें करंट इवेंट्स को देखना पड़ेगा। फिर बाकी सब्जेक्ट, ये तो हिस्ट्री हो गया, ये ज्योग्राफी हो गया, ये पॉलिटी गवर्नेंस हो गया, हम आएंगे इकोनॉमिक्स पे। हमारा जो सिलेबस ऑफ इंडियन इकोनॉमी अभी हमने मेंस पे देखा है, उससे रिलेटेड प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है। Now let's focus upon the very words which have been used over here. Economic and social development, we have seen that the very nomenclature of GS means Indian economy में economic development दी गई थी, यहाँ पे इसके साथ economic and social development को जोड़ा गया है ना। So economic and social development are complementary to each other. They are two facets of the same coin. They are, I would say, quite reinforcing to each other, and that is why economic and social development ये देखना है। The very next words used are sustainable development. Quite surprisingly, we do not found this as a mention in your main syllabus anywhere. Of course, I mentioned it as a passing by reference, but these two words are not found in your main syllabus. So what exactly is sustainable development? This is a huge gamut of activities which the world undertakes now, or the world have gathered of late. Its importance, how much importance it is being associated with. अब दुनिया की लगभग सारे सरकारें इसके साथ एसोसिएट होती है और अपने आप को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कमिट करती है। क्या इतना इंपॉर्टेंस है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि जिसकी वजह से ये बोला जा रहा है कि इफ द ह्यूमन रेस सर्वाइव्स on this planet, or if it wants to survive on this planet along with the planet itself, it has to inherently go for sustainable development. तो ये हमें यहाँ पे देखना है। Then एक टॉपिक आ रहा है पॉवर्टी। अगेन हमने इस वर्ड को प्रीलिम्स में मेंस में नहीं देखा है, कहीं पे आपने पॉवर्टी, ये मेरे लेक्चर में आपने सुना होगा, मैंने इसको बोला है, लेकिन आपने एज अ वर्ड वो मेंशन होते हुए नहीं देखा है। But does that mean that in mains we do not require sustainable development? Or does that mean in mains we do not require poverty to be learnt? No, it doesn't mean so. Of course, this word inclusion is mentioned in mains also. जहाँ पे इसका word था inclusivity. Inclusivity था, inclusion उसी का relation है. So we have seen this word in mains, and we have seen its importance as well. But it is coupled with poverty over here. So poverty is not mentioned in mains. Inclusion is founding mention. Then demographics. Again, this word is not mentioned. Demographics. Now we all know that demographics relates to the science of population, or it relates to what is called as the aspects related to population. And many a times you could have heard about words used such as demographic dividends, phrases such as demographic dividend. Now, what are demographics? If it is not mentioned in mains, doesn't mean that it is not there. And if it is mentioned in prelims, doesn't mean that all those things which are not mentioned in prelims, which are mentioned in mains, are not in prelims. समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर कोई चीज prelims में mentioned है, mains में नहीं है सिलेबस में, मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि हमें उस पर सवाल वहां नहीं पूछे जा सकते। एंड वाइस वर्सा, अगर कोई चीज प्रीलिम्स में मेंशन है लेकिन मेंस वाली चीज नहीं मेंशन है, तो प्रीलिम्स में उस पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे। डजंट मीन इट लाइक दैट। ठीक है, आगे चलते हैं। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स की बात हो रही है। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स क्या होते हैं भैया? ऑल दोज इनिशिएटिव्स थ्रू द स्कीम्स, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ डेवलपमेंट launched by the government of India, the government of states respectively, for the welfare of the social sector. That means health, education, sanitation, or all those areas associated with the weaker and the deprived sections of the society, and which are also linked with the rest of the society, is nothing but the social sector initiatives. So what are we going to talk about over here? क्या है क्या social sector initiative? These are all the schemes post independence that India have enacted, implemented, their successes and failures, and all those schemes which are still being introduced and getting implemented. तो ये हो गई आपकी social sector initiatives of the government. और फिर ये बोलते हैं etc. Believe me, ये etc. word सबसे challenging part है UPSC के syllabus का. Why? Because it could mean anything to anybody.
just by writing this etc., UPSC could give you an endless list of syllabic content without listing it either, and then asking you to prepare for this etc. Or if you ask me simply to rephrase or to paraphrase the syllabus of UPSC, I could simply paraphrase it in 3 words, etc., etc., etc. So this etc. means a danger mark for us, क्योंकि इसके गार्ड में कई सारी चीजें हमें करनी पड़ सकती है, जो हुआ है, जो हो रहा है और जो होने की संभावना है उसका भी. ठीक है. So this is about the prelim syllabus. Now, if you take a look at this, what could we gather out of this? If one has to just focus upon the prelim syllabus and ask himself or herself a question as to how many chapters am I supposed to learn in this, one do not get any concrete idea. That is the reason why, dear friends, in the initial remarks, as I said, that we have to go from mains towards prelims. It should not be a journey of prelims to mains. Of course, it's our journey while attempting the exam. But in order to prepare, you must have seen interviews of toppers, you must have read their interviews, you must have seen them on YouTubes. What do they opine about this? All of them have given the same opinion what I'm trying to tell you, that I have studied for mains. I have not separately studied for prelims. It got automatically covered in prelims or in mains for prelims. I have practiced separately for prelims because prelims requires MCQ practice and mains requires subjective answer writing practice. It's only this difference. Otherwise, these two syllabus contents of the mains and prelims have to be merged together. Because if one would like to just simply look at this single line syllabus and say, what is this? This is bullshit. कौन से chapters पढ़ने हैं मुझे भैया इसमें? Economic and social development ऐसा कोई chapter होता है क्या? होता भी होगा तो एक जगह तो दिखता नहीं है. Sustainable development क्या ही एक chapter है या एक overall gamut है जो हर chapter से लिंक कर जाता है? Poverty क्या chapter की तरह हमें पढ़ना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं. लेकिन क्या इतना ही chapter पढ़ के काम हो जाएगा? Inclusion क्या ये chapter है कि ये strategy है? या for that matter demographics क्या सिर्फ उसकी statistical appeal हमारे लिए वो काम करने की जो हम चाहते हैं? Social sector initiatives क्या ये chapter है? तो just by looking at this prelim syllabic content, one can hardly get any, I would say, concrete idea as to what to study, how much to study, for how long to study, from where to study, how deep to study, how shallow to study. One gets completely perplexed and bogged down under pressure. That is perhaps one of the reasons, my dear friends, that you found economics to be a tough nut to crack. But let me tell you again, as I said earlier, if you link this syllabus with the main syllabus, even in the main syllabus, we have seen that not all the chapters are being mentioned. It's not mentioned everywhere. So let's again link it with the main syllabus. Let's take a quick zip through with the main syllabus over here. Look at this. How many chapters are getting mentioned over here? This one, planning is mentioned, but mobilization of resources is not a chapter. Growth is not a chapter, it's a concept. Development, employment, these are concepts. These are not chapters. Now think about this. Inclusive growth, it's not a chapter. It is simply another concept linked with growth. So it's not a chapter. Indian economy, of course, you can say evolution of Indian economy is a chapter. But this is not a chapter. Government budgeting, of course, is a part of public finance. So what is the most important is public finance. But the entire syllabus, neither in prelims nor in mains, mentioned these two words nowhere. कहीं पे नहीं आ रहे ये दो words. इसका मतलब क्या? हमें पढ़ना क्या पड़ेगा भैया? हमें कौन से chapters को देखना पड़ेगा? ये chapters हमें देखने पड़ेंगे. आगे देखो इसमें क्या? Major crops and cropping patterns है. अब मैं बता चुका हूँ आपको कि chapter agriculture है. But कहीं पे भी ये agriculture word को यहाँ पे लिखते नहीं है. देखो कहीं पे भी आपको ये तीनों points में कहीं ना कहीं agriculture word आपको दिखाई नहीं देगा. Major crops cropping patterns की बात कर रहे हैं, different types of irrigation की बात हो रही है, बट एग्रीकल्चर चैप्टर की बात नहीं हो रही है. हाँ, ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के हिसाब से एग्रीकल्चर वर्ड आया है, बट इतना ही मिलता है. बट डज दैट मीन कि भाई कौन सा चैप्टर है? ऑफ कोर्स यू कैन सिंपली जज कि भाई इससे हमें पता चलेगा एग्रीकल्चर की चैप्टर पढ़नी पड़ेगी. बट थिंक अबाउट दिस, इफ यू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर एज अ चैप्टर, दैट रेस्ट ऑफ द 2 to 3 points to follow
are concentrated only on agriculture. Think about this, look at this. ये फार्म सब्सिडीज की बात हो रही है, एग्रीकल्चर है. ये एमएसपी की बात हो रही है, एग्रीकल्चर है. पीडीएस की बात हो रही है, एग्रीकल्चर है. और टेक्नोलॉजी मिशंस, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, सब कुछ तो एग्रीकल्चर है. सो one can simply get a feeling that by reading agriculture in its complete longitudinal and latitudinal extent and in complete width and depth will suffice. No, it doesn't. We have to link agriculture by reading in that way with the rest of the other chapters. So think about this. तो हमें इसको लिंक करना पड़ेगा. So फिर देखते हैं क्या होता है. तीसरा टॉपिक भी आपको फूड प्रोसेसिंग की बात कर रहा है. क्या ये चैप्टर हो सकता है? फूड प्रोसेसिंग इज नॉट अ चैप्टर, इट्स अ टॉपिक involved in the overall gamut of agriculture and industrial development. It gets inherently linked with industry because it talks about industry. It's an industry that we are speaking about. And ironically, nowhere the UPSC stipulates industry as a separate chapter for India. It simply talks about Indian economic development. How can there be development without industry? And it nowhere mentions the chapter in prelims also. Does that mean that we are not supposed to learn the chapter of industry? No, it's not like that. It's we have to judge कि हमें वो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है. फिर ये आगे की क्या बात करते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये भी एक टॉपिक हो सकता है. लैंड रिफॉर्म्स की बात करें, ये भी एग्रीकल्चर का एक टॉपिक है. लिबरलाइजेशन क्या ये चैप्टर है? एलपीजी क्या ये चैप्टर है? नहीं, ये एक फिनोमिनन है, ये एक कंसेप्ट है जो अलग अलग चैप्टर्स के साथ लिंक करनी पड़ेगी हमें, है ना. हाँ, आप ये बोल सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ चैप्टर, फाइन, बट इन्वेस्टमेंट मॉडल्स क्या ये चैप्टर है? नो, ये एक टॉपिक है जो अक्रॉस दी बोर्ड आपको लिंक करना पड़ेगा. सो ऐसे कौन से चैप्टर्स है भैया जो हमें पढ़ने पड़ेंगे? इफ यू नाउ ट्राई टू कंसोलिडेट दीज टू syllabi of mains as well as prelims, what we are gathering as a central idea, or what we should gather as a central idea: A, they want our concrete understanding of both of these syllabus together. B, they do not mention the names of all the chapters in the syllabus. Some are mentioned in mains, not mentioned in prelims. Some are mentioned in prelims, not mentioned in mains. And some are not mentioned at all anywhere in prelims or mains, which we have to inherently study and excel. कैसे करेंगे हम लोग इसको? ये तभी कर पाएंगे जब हमारे पास एक लिस्ट ऑफ चैप्टर्स होगी जो हमें इस सिलेबस के, अभी जो हम इसको डिकोड कर चुके हैं, इस सिलेबस को डिकोड करने के बाद हमें खुद को बनानी पड़ेगी, या जो बुक में मिलेगी आपको, कि कौन से चैप्टर्स कहां से कैसे पढ़ने पड़ेंगे. ठीक है ना. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. आई थिंक द बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन यू मस्ट हैव बीन कंक्रीटाइज्ड नाउ दैट ए वी हैव टू गो फॉर मेंस कम प्री अप्रोच. लेट मी पुट इट लाइक दिस, एज आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल माय स्टूडेंट्स कि द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, especially with regard to Indian economy, of course it is true for any other subject as well to a large extent, but more so with Indian economy, is like a rowdy Rathod syllabus. ये जो आपने फेमस अक्षय कुमार की फिल्म आई थी ना, राउडी राठौड़, है ना, उसमें उसका एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था कि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं. तो सिंपली लाइक दिस, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यूपीएससी का सिलेबस इज लाइक अ राउडी राठौर सिलेबस. क्योंकि देखो, जो वो लिखते हैं दे आस्क क्वेश्चंस अपॉन, मतलब हम उस डायलॉग को मॉडिफाई करके बोल सकते हैं कि जो वो लिखता है वो पूछता है, लेकिन जो वो नहीं लिखते उसके ऊपर वो डेफिनेटली सवाल पूछता है. इसका मतलब देयर इज अ क्लैंडेस्टाइन पार्ट ऑफ योर सिलेबस व्हिच इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड. You have to gather that meaning from the fumigation. आपको वहां से वो मीनिंग गैदर करना पड़ेगा और खुद को समझाना पड़ेगा कि we have to learn these chapters as well, because it's a rowdy syllabus. They may ask on topics which have not been mentioned explicitly in the syllabus, but which are otherwise stemming from the syllabus. तो हमें समझना पड़ेगा कि इस सिलेबस से हमें ये पढ़ने पड़ेंगे. सो हमें पहली बात तो अब तक के डिस्कशन पे ये क्लियर हो जाना चाहिए कि पहला तो हमें एक कलेक्टिव स्ट्रेटजी अपनानी है, एक मेंस कम प्री अप्रोच अपनाना है. प्रैक्टिस उसकी अलग अलग भले ही करेंगे हम, लेकिन स्टडी अलग अलग हो नहीं सकता. एक इंटीग्रेटेड स्टडी प्रपोजल हमारा होना चाहिए. मेंस का स्टडी अलग कर रहे हैं, प्रीलिम्स का स्टडी अलग कर रहे हैं. ये प्रीलिम्स का एग्रीकल्चर है, ये मेंस का इंडस्ट्री है, ये सर्विस सेक्टर. देखो, सर्विस सेक्टर जैसा इतना बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं देता.
ना प्रीलिम्स में है ना मेंस में है, एंड इंडिया इज गेटिंग 70% ऑफ इट्स जीडीपी शेयर नाउ फ्रॉम द सर्विस इंडस्ट्री. व्हाट इज इट? इसका मतलब ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें वर्बैटिम सिलेबस को चेस करके कोई फायदा नहीं है. यूनिवर्सिटी फॉर्मेट में नहीं चलना है. यूनिवर्सिटी फॉर्मेट इज दैट लुक एट द सिलेबस, pick up a guide from the market, chapter by chapter the guide is arranged according to the syllabus, then rectify the stuff and then go to the exam. This kind of a approach is not going to help you out over here in civil services, especially not in economics. It is going to be a suicidal move. So think about this. हम क्या करेंगे? पहली बात तो हम एक मेंस कम प्री इंटीग्रेटेड अप्रोच लेंगे. दूसरी बात, हम इसमें जो वर्ड्स मेंशन किए गए हैं उनमें से कुछ चैप्टर्स स्टेम होते हैं, उनको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट जो नहीं मेंशन किए गए उनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा. थिंक अबाउट दिस. अनदर चैप्टर कुड बी इन्फ्लेशन. बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, कहीं मेंशन नहीं किया गया. बैंकिंग के बारे में कहीं नहीं बोला गया. शेयर मार्केट के बारे में कोई वर्ड नहीं है आपके दोनों सिलेबस में. Does that mean that we are not expected to study that? No, it's not like that. We have to study it inherently because a good chunk of your questions are coming from this, which we'll take a look of a very short while from now. तो मतलब क्या, हमें एक इंटीग्रेटेड मॉडल बना के उसमें पोर इन करनी पड़ेगी चीजें और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा. हर किसी का अपना स्टडी प्लान अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका डायरेक्शन एक होना चाहिए, कॉन्क्रीट एंड इंटीग्रेटेड. Don't study isolatedly for mains and prelims. Do practice isolatedly for prelims and mains. For prelims, MCQ practice, and for mains, a descriptive answer writing practice. And in both ways, you require statistics for prelims or informative aspects from prelims, which could be described upon in mains. आपको ये दोनों जगह चलेगा. मतलब आपकी खुद की शॉर्ट नोट्स बने तो बहुत अच्छी बात है. अगर आप वो ना बना पाओ तो किसी की रेडीमेड शॉर्ट नोट्स को या पीडीएफ्स को यूज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट ऑलवेज ट्राई टू कल्टिवेट अ कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग सो दैट इन मेंस यू कुड हैव अ फ्लो ऑफ थॉट. व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इवैल्यूएटर व्हाइल आस्किंग यू क्वेश्चंस ऑन दैट? दैट द पर्सन इज वेल इक्विप्ड विद द क्वेश्चन कंटेंट. द पर्सन हैव स्टडीड इट. It's only then you could be in a better position to explain. B, the person has got art of designing answer. The person can convince the evaluator in a easy, lucid, presentable manner. What you asked and what I have given you an answer. This is what I give it to you. Look at this. It's simply what you have asked me. It's simply where you have solicited my opinion. I have expressed my opinion in the best possible way that I could. ये सब हमें देखना पड़ेगा. और इसीलिए मेंस के लिए राइटिंग प्रैक्टिस का हमारा सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए. और प्रीलिम्स के लिए, नाउ दोस पीपल हु आर गोइंग टू अपीयर इन दिस ईयर्स प्रीलिम्स नाउ, दैट इज द अपकमिंग प्रीलिम्स आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हिच इज द प्रीलिम्स 2022, जिसके लिए अभी हम लोग फॉर्म ही नहीं भरे, जो अभी फरवरी में भरेंगे, है ना. कम द मंथ ऑफ फरवरी एंड वी विल फिल अप द फॉर्म्स ऑफ दिस ईयर्स प्रीलिम्स. बट दोज हु आर स्टडीइंग सीरियसली फ्रॉम द लास्ट ईयर फॉर दिस आर ऑलरेडी in the race of this year's prelims. तो फिर हम लोग उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि now it's not the time to focus more upon the mains answer writing practice. You have to now focus more upon the MCQs or the objective type questions, है ना. So what is more important is to be more informative, is to be more conceptual learning along with facts gathering together. क्योंकि कई बार prelims में भी conceptual analytical सवाल आ रहे हैं, कई बार आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल भी दिख जाएंगे, ऐसी बात नहीं है. सो वी हैव टू कीप आवर कप फुल विद बोथ ऑफ देम, मिल्क एंड टी टुगेदर. तो अगर आप ये देखो तो हमें इसको कोडिफाई करके ये पता चल गया है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम देखेंगे कुछ नमूने हैं क्वेश्चंस के कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें आए हैं. नाउ हैविंग अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ अ कलेक्टिव इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी, नाउ परहैप्स आई बिलीव दैट यू कुड बी इन अ फार बेटर पोजीशन टू डील विद दीज क्वेश्चंस. If you have already taken a look at these questions, no problem. If you haven't, now let's take a look at these questions. इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस को उठाए हैं और अब इसका थोड़ा क्योंकि एक लेक्चर में बहुत कुछ तो हम हर चीज तो नहीं की जा सकती, बट थोड़ा अपील ऑफ द क्वेश्चन क्या है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, समझने की कोशिश करेंगे. नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस. बिफोर दैट,
I have to also tell you, as I said earlier, that what are the chapters that we are going to learn. है ना, कि हमें देखना पड़ेगा chapters क्या क्या है. Give me a second. Yes. So this is on your screens, dear students, the Aakar pattern lecture plan for the subject economics. देखो, मेंस और प्रीलिम्स के दोनों सिलेबस को डिकोड करने के बाद हमें पता चलता है कि कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने पड़ेंगे. Now this is the first one, introduction. In introduction, we are going to learn about economics, of course, as I said earlier. Even though we are not going to focus much on economics, but inherently we have to enter the cave by learning the basic concepts of economics. So very first chapter is going to be basic concepts of economics. Okay? So then the discipline, the organization of an economy, the role of the state in an economy, the Washington consensus, what are the different sectors of the economy, what are the different types of the economy, what is the idea of national income. All of this, again, in national income idea, we'll learn about GDP, NDP, etc. ठीक है. So ये हमारा पहला चैप्टर रहेगा. फिर हमने growth इस word को देखा है. Growth, development and happiness. We have seen development as a word as well. So we'll talk about the growth, development, happiness aspects. We'll gain into insights into the human behavior regarding growth, development and happiness. And in both the prelims and mains syllabus, the word development is used, as we all know. Economic development in mains and socio-economic development or economic and social development in prelims. So what is more important is this, then evolution of the Indian economy, as we all know, right from the rumbles of the colonial economy as it was handed over to us. हम लोग इवॉल्व किए हैं, तो फिर कैसे हमारा एग्रीकल्चर का स्टेटस था, इंडस्ट्री का स्टेटस था, प्लान्ड एंड मिक्स इकोनॉमी हम कैसे बनने की कोशिश किए, एंड देन नेचुरली फॉलोज द चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. हम देख चुके हैं कि हमें प्लानिंग का चैप्टर करना है. सो 12 5-year plans have already been completed. What are the different types of planning? How India planned in its socialism, how India planned for its new avatar of liberalism and globalization, privatization. So ये सारी चीजें economic planning में आएगी. Then next is again an extension of the very chapter of planning itself only. ठीक है. Then economic reforms. Now you haven't seen these two words mentioned anywhere in the syllabus as such. The word reform come only in the land reforms chapter. But economic reforms is the entire gamut of economic reforms that we have to make in all the sectors of the economy. So it is, and it's a consistent aspect as well. It is a continuous aspect of as well. Every economy has to be replenished at regular intervals through economic reforms. So हमें ये चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा. आगे हम और क्या पढ़ेंगे? देखो, इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल की बात होगी. मैंने कहा था आपसे, ये आपको कहीं पे भी सिलेबस में नहीं मिलेगा, बट वी हैव टू लर्न, बिकॉज विदाउट लर्निंग इन्फ्लेशन we are not going to be in a situation to answer a question based upon inflation. हमें एक टेम्पलेट देखना है उसमें का अभी भी. ठीक है. तो फिर इन्फ्लेशन देखेंगे, बिजनेस साइकिल्स देखेंगे. This is related to business cycles. Then agriculture and food management. Now we have seen at least 3 to 4 points related, dedicated directly to agriculture. तो ये उसका चैप्टर है. Food security, food subsidy. We have seen subsidy aspect, farm subsidy aspects. ये सब एग्रीकल्चर के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. This is also agriculture chapter. A healthy weightage is given in the Aakar pattern lecture plan for this because it finds a great mention in main syllabus. ठीक है. Then industry and infrastructure. We haven't found mention of the word industry, but we have to study inherently the chapter of industry. We have seen the chapter of infrastructure. We are clubbing them together because they have got an inherent natural link with each other. Without adequate infrastructural preparedness, the country's industrial growth is a misnomer, and that's why अगर आप ये देखो तो ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा. आगे चलेंगे हम. सर्विस सेक्टर, विच आई हैव सेड कि कहीं पे भी आपके सिलेबस में दिखाई नहीं देता, बट आपकी इकोनॉमी का डोमिनेंट एस्पेक्ट है. दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न अपॉन सर्विस सेक्टर आल्सो. वी आर आल्सो गोइंग टू लर्न अपॉन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट. दे हैवंट टॉक्ड अबाउट द बैंकिंग एंड शेयर मार्केट, बट वी हैव टू लर्न इट फ्रॉम देयर. Indian money market, financial market, mutual funds and whatnot. Everything has to be learned. Then banking in India, we haven't seen the word used in your prelims or main syllabus in banking as such.
But without learning banking, how could you learn the financial system of the country? And banking is the backbone of any economy as such. And that's why banking in India also is going to be learned over here. Nationalization of banks, then wishful defaulter, capital adequacy ratios, Basel norms, everything has to be learned now. है ना? Then evolution of banking, ये सब देखना ही है हमें इसमें. Then insurance industry, ये भी हमने कहीं नहीं देखा. अब ये क्यों learn करना पड़ेगा? Because there are questions. If you go by the last previous years question papers, there are questions asked on this. इंश्योरेंस के ऊपर सवाल आते हैं. सिक्योरिटी मार्केट जिसको हम शेयर मार्केट कहते हैं, वो भी हमें बड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. Then what else that we are going to study? External sector of India. They have mentioned nowhere in your syllabus this sector. They do mention about social sector, but not the external sector. But they do ask questions in mains and prelims upon that. They do talk about trade, international trade. They do talk about exempt trade, export and import trade. So what's going to make a difference over here? While learning this chapter, we are trying to link ourselves with those topics of questions areas which have been asked. समझे कि नहीं? Even if it is not found in an explicit mention in the syllabus anywhere. Now think about this, where we are talking about the currency dynamics, different types of currencies, the convertible ratios, the types of conversions, what are the different concepts related with this, SAFTA, SICA, RCEP, beta. We'll try to understand this. International crude oil prices movement, the dollar to rupee conversion, ये सब हमें देखना पड़ेगा. ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, ना मेंस में है ना प्रीलिम्स में, but they are inherently economy. We have to learn them as concept of economics and application in Indian economy and the world economy. तो देखो ये dynamism है इसके साथ जुड़ा हुआ. Then international economic organizations, do we find anywhere it is mentioned? No, it is not mentioned, but inherently हमें इसको study करना पड़ेगा. So as if it seems in my opening remarks, as I told you, that syllabus दिखने के लिए तो बहुत छोटा दिखता है, but है वैसे बहुत बड़ा. The reading between the lines अगर आपको पता चले तो ये राउडी राठौड़ है, जो नहीं लिखा ये इतना सारा है, तो जो नहीं लिखा ये भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछते हैं इस पे ऊपर सवाल, तो पढ़ लेंगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है. You give us, you do not give us, we are prepared because we are going for the kill, mind you. ठीक है ना, ये बात है. आगे चलते. टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया की बात है, कहीं पे भी टैक्सेशन आपके सिलेबस में नहीं दिखाई दे रहा, वो हमें पढ़ना पड़ेगा. ये पब्लिक फाइनेंस का मैटर है. पब्लिक फाइनेंस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बजटिंग, एक्सपेंडिचर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स, ये सारी कंसेप्ट्स आएगी आपको इसमें, ये हमें देखना है. देन व्हाट एल्स आर वी गोइंग टू डू? टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स. इसमें एक बजटिंग का चैप्टर तो देखा है आपके सिलेबस में, आपने लिखा है, गवर्नमेंट बजटिंग नाम का एक स्पेशली डेडिकेटेड टॉपिक इन्होंने दिया है, इससे रिलेट कर जाता है ये. देन सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज. देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में, it's not mentioned in the mains though, but it is applicable both ways. So we are talking about the sustainability and climate change aspect. We will link it together and have a recipe for us. You ask us question anywhere and we are ready for that, no problem. Then 26, preparing for the demographic dividend. We talked about demography in prelims, but we are talking about here in mains, because this is a mains lecture plan, and in mains lecture plan we are talking about demographic dividend. So we will talk about demographics here itself, and that is the reason why I told you that you should be mains cum pre. The journey should be from mains towards pre. It should not be vice versa. ठीक है, आगे चलते. ह्यूमन डेवलपमेंट, देखो इसकी तो कहीं बात ही नहीं की थी हमने इससे पहले, बट कुछ चीजें हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ है, सोशल सेक्टर है, ये अलग अलग एस्पेक्ट्स है इसमें, लेबर रिफॉर्म्स, चाइल्ड सेक्स रेशियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे ह्यूमन डेवलपमेंट अलग अलग इंडाइसेस आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे. Human Development Index, there is a multi-dimensional poverty index, human poverty index, physical quality of life index, and number of such indices, global inequality index, global hunger index, XYZ indices have to be indices linked with human development. Again, a static part and a dynamic part, more so with the dynamism over here. ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा. Then demographics and socio-economic caste census जो 2011 का हुआ है, जो next होगा उसकी भी statistics हमें देखनी पड़ेगी. ठीक है. सो इस तरह से हमें ये इतने चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, सो वी कैन गेट अ कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स. एंड नाउ इट्स द वे टू लुक टुवर्ड्स फ्यू क्वेश्चंस, माय डियर स्टूडेंट्स. आप देखते हैं कि भाई क्वेश्चंस कैसे कैसे हमें आते हैं इस बारे में. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मेंस एनालिसिस. देखो मेंस में 2021 का पेपर हमने लिया है, दोनों भाषाओं में आपके सामने ये क्वेश्चन है.
ये 10 मार्कर है, 150 वर्ड्स के लिए आपको लिखना है। देखो क्या सवाल पूछा है यूपीएससी ने। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी ऑफ इंडियाज जीडीपी बिफोर द ईयर 2015 एंड आफ्टर द ईयर 2015। भारत की सकल घरेलू उत्पाद के वर्ष 2015 के पूर्व तथा वर्ष 2015 के पश्चात परिकलन विधि में अंतर की व्याख्या कीजिए। अब किस चीज पे ये सवाल पूछा है? ये सवाल बेसिकली नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जो हम जीडीपी पढ़ने जा रहे हैं उस पे पूछा हुआ सवाल है। और जीडीपी में एक चीज होती है जो हमें अंडरस्टैंड करनी होती है, दैट इज रिलेटेड टू बेस ईयर। और शायद आपने ये पढ़ा हो कि द बेस ईयर गॉट रिवाइज्ड इन 2015। द बेस ईयर गॉट रिवाइज्ड इन 2015। इंडियन इकोनॉमी का जो बेस ईयर है वो 2011 कर दिया गया 2015 में। इससे पहले जो 2004 हुआ करता था। मतलब क्या, अब जब 2015 का बेस ईयर हो चुका है, जो बेस ईयर बदलता है तो कैलकुलेटरी चीजें बदल जाती है। अब इसमें कई सारी कंसेप्ट है, आई एम नॉट एबल टू टेल यू इट here itself because it is a part of the chapter. We are not supposed to take it over here, but just a hint of that. What is the difference? The difference has been made by the base year. So answer writing का जो focus area होना चाहिए computing methodology का, वो base year से related है। Whereas word question में आपको कहीं पे भी base year दिखाई नहीं दिया। तो it is for you to understand, ठीक है ना, कि इसमें अंतर की व्याख्या क्या है। तो ये base year के अंतर की व्याख्या है, वही हमें यहाँ पे बताना है, 150 वर्ड्स में बताना है। तो फिर आपने कैसे लिखने की अपेक्षा है यहाँ पे कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी ऑफ इंडियाज जीडीपी बिफोर द ईयर 2015 एंड आफ्टर द ईयर। तो फिर फोकस ऑफ द और द फ्लो ऑफ द आंसर क्या होना चाहिए? टेल देम फर्स्ट अप दैट व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज द कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी used in India for GDP, then tell them about the base year concept, then tell them about what is called as the change in base year from 2004 to 2011, and then went on to conclude that due to these factors the methodology or the calculation have seen a change. So what is the difference made is by the base year. ये आपको बताना है, बड़ी सिंपल है, 10 मार्क का सवाल है, आप इसको इजीली लिख सकते हो if you have understood properly the concepts of GDP and linked it with what is called as the current happenings, क्योंकि change of base year happens to be current happening। हालांकि अभी उसको करके भी हमारे पास 6 साल निपट गए हैं, उसके बाद यूपीएससी आपसे ये सवाल पूछ रही है। इसका मतलब क्या? आर दे वांटिंग यू टू स्टडी करंट अफेयर्स फ्रॉम द लास्ट 5 years? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये कहीं ना कहीं चर्चा में जरूर रहा है सॉरी, कहीं ना कहीं ये चर्चा में जरूर रहा है, क्योंकि यू माइट हैव सीन कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग आकलन आते हैं। somebody says that Indian economy is going to grow by 9.2%. Somebody says that no, it's going to be 8.1%. Somebody says as pessimistically as the few people in India that no, it was basically minus 7.3%. Somebody is going to say that it's a V-shaped recovery. Somebody is going to say that it's a W-shaped recovery. ये अलग अलग किस्म की बातें जो होती है, ये जीडीपी की तो बात हो रही है, और इसीलिए जो डिफरेंस है इन लोगों के ओपिनियन में वो बेस ईयर की कंसेप्ट का डिफरेंस है। तो ये आपका पहला सवाल बन जाता है। नाउ लेट्स फोकस ऑन वन मोर क्वेश्चन। एक और सवाल आपसे 2021 में पूछा गया, 10 मार्क का है, 150 वर्ड्स को लिए आपको लिखना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैपिटल बजट एंड द रेवेन्यू बजट एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ बोथ ऑफ दीज बजट्स। मेरे ख्याल से तो ये बड़ा ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये कंक्रीट कंसेप्ट से रिलेट करता है। क्योंकि हमारे पास वी हैव लर्न्ड बजट, हम बजट को सीखेंगे, वी हैव रेड बजट। देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट एंड रेवेन्यू अकाउंट, एंड दीज 2 अकाउंट्स आर रिलेटेड टू द कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट। So the components of the capital budget and the components of the revenue budget are just to be enlisted. That's it. This is your answer. You have to just simply distinguish between capital budget and revenue budget and give them the components of those. That's it. कितना आसान सवाल पूछ लिया आपसे, इससे तो ज्यादा प्रीलिम्स डिफिकल्ट हो जाती है कभी कभी। आगे चलते, इसमें आपने बड़ा सिंपल आंसर करना है। Another question comes to your mind. अगेन ये भी 2021 का क्वेश्चन है। क्या पूछते हैं? 10 मार्कर लिया है 150 वर्ड्स के लिए। हाउ डिड लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री हेल्प to improve the socio-economic conditions of marginal and small farmers?
Now अभी हमने देखा topic of land reform was mentioned in your syllabus in mains, and the question is here for you. How did land reforms in some part of the country help to improve the socio-economic conditions of marginal and small farmers? Now, we all know that land reforms in India have not yielded the same kind of results everywhere in all the states. Few states are good beneficiaries of land reforms, and hence the question relates to those states. Especially those states are northern states, and that's why land reforms in some part of the country help to improve the socio-economic conditions of small and marginal farmers. Now, this is agriculture. This is land reforms topic. So this becomes a very easy issue for you. First, you have to tell them that what is land reforms, what are the successes and failures, what are the efforts made by the government of India for land reforms and the state governments in succession, and then tell them how it has made improvements in several areas of the country, especially in the plight of the marginal and small farmers. That's it. Conclude it. Simple है, आसानी है. आगे चलते हैं. Next question is on your screen. Do you agree that the Indian economy has recently experienced a V-shaped recovery? And give reasons in support of your answer. अब ये 250 words के लिए पूछा गया है, 15 marks का सवाल है. A very short while ago I mentioned the word V-shaped, W-shaped recovery. Now what is recovery? You have to first tell them भाई action क्या होना चाहिए इस सवाल का. Action plan होना चाहिए. First tell them what is recovery. Now in business cycles, inflation and business cycle is the chapter, and in business cycles we have to learn about recovery. What the world is witnessing now and has witnessed even before the advent of this pandemic is a global slowdown or the financial meltdown. Now, whenever the world economy or a domestic economy slips into recession or a depression or a chronic depression or a breakdown of the economy, it has to take recourse to recovery. Without recovery, there can be no restoration of the earlier momentum in the economy. So first you have to tell them what is recovery and what is the importance of recovery in an economy. And then you have to tell them about the recent global pandemic and its aftermath in the dwindling down of the global economy, a world recession fomented by this pandemic. Then link it with the different kind of what is called as opinions expressed by many experts about whether this kind of a recovery is going to be V-shaped, W-shaped. Somebody talked about an Y-shaped. Different types of shapes of recoveries are there, which of course we have to learn in the classroom as such. So it talks about that V-shaped recovery. And if you believe that this recovery have been V-shaped, you have to give simple reasons in your support. That's it. हो गया आंसर खत्म. तो अगर V-shaped recovery है तो आपका सपोर्ट का आंसर लिख दो. तो फ्लो ये होना चाहिए, एक छोटा सा कंक्लूजन आफ्टर में डाल देना, खत्म हो गई बात. ठीक है. Then switch on to the next question. Investment in infrastructure is essential for more rapid and inclusive economic growth. Discuss in the light of India's experience. Now, very recently I've mentioned in the chapter of infrastructure, investment has been a huge challenge. It is still a huge challenge. And we need huge amount of investment in infrastructure. The world is struggling to find its momentum with infrastructure. Without infrastructure, it could not have growth. ठीक है. तो देखो इन्होंने यही सवाल पूछ लिया आपसे. इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सिलेबस में मेंशन भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट रैपिड और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है. देखो 3-4 चीजें ज्वाइन कर दी इन्होंने. इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्लूसिविटी के साथ और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ दिया. मतलब क्या? 3 chapters or 3 topics of different chapters are linked together and poured into a question and put it in front of you. What you have to do now, what is expected of you to decode the question properly, to think about the question tag which is discuss. ठीक है. और फिर क्या होना चाहिए हमारा फ्लो ऑफ आंसर क्या होना चाहिए. फर्स्ट टेल देम व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बता दिया. देन टेल देम व्हाट इज इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बता दिया. फिर बता दो हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. फिर बता दो हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैपिटा इज एसेंशियल फॉर इंक्लूसिविटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ. एंड देन बता दो कि इन्वेस्टमेंट का चैलेंज क्या है और इन्वेस्टमेंट के चैलेंज को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. दैट्स इट, खत्म हो गया. 250 वर्ड्स इनफ, यू कैन राइट अबाउट इट. यू कैन इवन ड्रॉप इन a flow chart for your support if the need be, if you feel it like relevant to be. तो ये आप कर सकते हो. This is about infrastructure. ठीक है. आगे चलते हैं. देखो बड़े आसानी से आप सवाल पास कर सकते हो इसमें.
Next question is, what are the salient features of the National Food Security Act 2013? How has the Food Security Bill helped in eliminating hunger and malnourishment in India? अब देखो हमने we have seen food security as a part of the syllabus, and they talked about National Food Security Act 2013. Now, do they want you to study current affairs of the last 7 to 8 to 9 years? No, it's not simply like that. Food security is always a burning issue in India, especially when the rankings of India in the global hunger index has been on the lowest end. And that is the reason why they have asked you this question. So you are supposed to go through the salient features of the National Food Security Act and how has the Food Security Bill helped in eliminating hunger and malnourishment in India. So whatever hunger and malnourishment has been eliminated, you have to tell them the success figures of both of them. खत्म हो गया 250 वर्ड्स हो गए. तो फिर इसमें भी क्या देखना पड़ेगा? आप बता दो एनएफएसए के नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के सैलिएंट फीचर्स बता दो. फूड सिक्योरिटी बिल में आपको हंगर और माल नरिशमेंट को इन्होंने बोला है, तो सबसे पहले आप बेटर होता कि आप हंगर और माल नरिशमेंट को इनको बता दो व्हाट इज हंगर एंड व्हाट इज माल नरिशमेंट. उसको कर्व करने के लिए हमने एनएफएसए कैसे लाया है. अब एनएफएसए के कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो जिससे फूड सिक्योरिटी का हमारा ये जो हंगर और माल नरिशमेंट का सक्सेस और फेलियर्स क्या क्या रहे बता दो. बात खत्म हो गया. दिस इज व्हाट इज द सिंपल आंसर टू दिस. आगे चलते हैं. अब मैंने कुछ प्रीलिम्स के सवाल लिए आपके लिए. आई थिंक मेंस के सवाल इनफ हो गए. नाउ फ्यू प्रीलिम्स क्वेश्चंस आर फॉर यू. These are the prelims questions. Consider the following statements. First, the governor of the RBI is appointed by the central government. Second, certain provisions in the Constitution of India give the central government the right to issue directions to the RBI in public interest. And third, the governor of the RBI draws his power from the RBI Act. Which of the above statements are correct? अब देखो, इसको अगर आप देखो तो ये तो अगर हम बैंकिंग का चैप्टर पढ़ेंगे, आरबीआई की फंक्शंस को पढ़ेंगे, आरबीआई एक्ट की बात पढ़ेंगे, सो द आंसर बिकम्स वेरी इजी. दे आर आस्किंग यू टू पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट्स व्हिच आर करेक्ट बोला है ना. सो व्हाट आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स ओवर हियर? दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. द आरबीआई गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इज दिस अ करेक्ट स्टेटमेंट? आंसर इज नो, इट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट because the RBI is an autonomous body and it enjoys substantial financial autonomy. Of course, it has to work in consonance with the central government, that's true. But certainly the Constitution doesn't provide anything to give directives to the RBI. That is why ye galat hai. The third sentence is right. It's a true statement, correct statement. Governor of RBI draws his power from the RBI Act. And hence the answer is 1 and 3 only. Because 2 is not the answer. आप कभी कभी इसमें एलिमिनेशन से भी जा सकते हो. देखो अगर आपको लगता है कि 2 नहीं है तो जिसमें 2 है वो आंसर हो नहीं सकता, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर आंसर यही तो बचता है. So this is about one prelims question. We'll move on to the other. I have more prelims questions for you. Now the second question is on your screen with reference to the casual workers employed in India. 2021 का पेपर है. Consider the following statements. All casual workers are entitled for Employees Provident Fund coverage, EPF का coverage है. All casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment. ये second statement है. Statement number 3, the government can by a notification specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account. ठीक है. अब क्या पूछा है इन्होंने? Which of these above statements are correct? ठीक है. Now let's prove them. पहला वाला sentence correct है क्या? Answer is yes, it is correct. All casual workers are entitled to EPF benefits. Second वाला sentence correct है क्या? Answer is yes, it is correct. All casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment. Now it is not whether it is getting followed or not, but what is in the act or what is entitled. It is right. This is the correct statement. The third is that the government can by a notification specify. This is also a correct statement कि वो बैंक अकाउंट में पैसा दे, और इसीलिए answer is 1, 2, 3. Very easy. Now think about this. We learn industry, we learn labor issues regarding industry, we learn labor reforms in economic reforms, and that's it. The answer is for you. ठीक है. If you have just focused upon the prelim syllabus, you would not have been in a better position to answer this question. Let me tell you very honestly. ठीक है. आगे चलते हैं. Question number 3. Which among the following steps is most likely to be taken at the time of an economic recession? कौन सी steps लेनी पड़ेगी economic recession के
दौरान हमें, या मोस्ट लाइकली स्टेप कौन सी होगी? कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिया हुआ है. कट इन टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट. हम टैक्स को कम करेंगे और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे उसी समय. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स. हम पब्लिक प्रोजेक्ट्स में सरकारी इन्वेस्टमेंट को या इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे. इंक्रीज इन टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाय रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट. हम टैक्स रेट को इंक्रीज करेंगे और इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करेंगे. फिर रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स. अब देखो, वैसे देखा जाए तो ये बड़ा ट्रबलसम लग सकता है आपको, बट बड़ा सिंपल है भैया. अगर आप कोर में, इफ यू हैव अंडरस्टूड द कोर कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, which we will make a endeavor to understand in the class as such. So, अगर उसको आप पूरी तरह से ठीक से अंडरस्टैंड करते हो, टैक्सेशन को, एक्सपेंडिचर को, पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट को, बैंकिंग को, तो आपको बड़ा आसानी से ये समझ में आएगा कि the answer happens to be the second one, increase in expenditure on public projects. Because what has been asked, which among the following steps is most likely to be taken at the time of economic recession? जब रिसेशन चल रहा होता है तो सबसे लाइकली स्टेप कौन सी होनी चाहिए? तो सबसे लाइकली स्टेप होगी ये, बिकॉज इट इज कीनीशियन इकोनॉमिक्स. दिस इज व्हाट लॉर्ड जॉन मेनार्ड कीन्स हैव टोल्ड यू, दैट इन रिसेशनरी टर्म्स यू हैव टू इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोजेक्ट्स, बिकॉज ओनली दैट कुड गिव यू रिकवरी. खत्म. देखो, बड़ा आसानी से आपको आंसर आ गया. आगे चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू डियर स्टूडेंट्स. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, the market demand for a good, which is a good means कोई भी वस्तु हो, good might increase if first price of its substitute increases, price of its complement increases, the good is an inferior good and income of the consumer increases, and fourth its price falls. Which of the above statements are correct? अब इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? देखो, पूछा क्या है, किसी भी चीज की मार्केट डिमांड कब इंक्रीज होती है? अगर बाकी चीजें अनचेंज रहे तो. ठीक है, तो कब इंक्रीज होती है किसी भी चीज की मार्केट डिमांड? नाउ थिंक अबाउट दिस. प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस. क्या ये स्टेटमेंट सही लगता है? आंसर इज यस, ये स्टेटमेंट सही है. क्योंकि देखो, अगर कोई भी बायर कोई भी चीज बाय करता है तो वो कंपेयर करके बाय करता है. तो अगर मान लो किसी चीज को वो खरीद रहा है और उस चीज की प्राइस बढ़ जाए और जो चीज उसके अफोर्डेबिलिटी में है वो उससे बाहर निकल जाए, तो किसी दूसरे गुड की प्राइस डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि वो उससे कम कीमत वाली गुड को खरीद सकता है, क्योंकि उसको अपनी जरूरत तो पूरी करनी पड़ेगी. व्हाट डज दैट मीन? इट मींस द मार्केट डिमांड फॉर अ गुड में इंक्रीज इफ द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस. सही है, मतलब सब्स्टिट्यूट की प्राइस इंक्रीज होगी, अरे ये महंगा हो गया, ये नहीं लूंगा, अभी ये लूंगा. ठीक है. देन प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस. ये कॉम्प्लीमेंट का कोई रिलेशन नहीं है, सो ये कोई सेंटेंस सही नहीं है. देन द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस. इसका भी कोई लॉजिक नहीं बनता, बिकॉज इफ द गुड इज एन इंफीरियर वन, पीपल विल टेंड नॉट टू डिमांड इट, रादर दे शुड शन इट्स डिमांड. ये देखना पड़ेगा आपको, तो ये भी सही नहीं है. एंड देन fourth is its price falls. Now we know that India is a price sensitive market, and prices, if they fall, that means there is a disinflation which is witnessed in the economy. Whenever prices are fall, the tendency of the demand of few goods moving across the spectrum is seen, and hence it's a correct statement. Now look at this. कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 and 4 ओनली. तो हमारा आंसर बनेगा A, 1 and 4 ओनली. तो देखो कितना आसान है. Conceptually, if you understand economics properly, you could be in a far better position to give answers in a correct format over here without the fear of deductions in the negative marking scheme. ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग. Think about the next question. With reference to urban cooperative banks in India, consider the following statements. Now, this is a factual question. This is a very easy question, if you ask me. ठीक है. First, they are supervised and regulated by local boards set up by the state governments. Second, they can issue equity shares and preference shares. Third, they were brought under the purview of the Banking Regulation Act 1949 through an amendment in 1966. Which of the statements given above are correct? So देखते हैं इनमें से कौन से statement correct है. Now, because the question is about urban cooperative banks in India, the first statement is incorrect. They are supervised and regulated by the local boards set up by the state governments. No,
They are not supervised by the local boards. They are supervised by the penultimate banks to govern them, and finally by the RBI. So this is an incorrect statement. Then second, can they issue equity shares and preference shares? Yes, they could issue equity shares and preference shares, and hence it's a correct statement. Third, they were brought under the purview of the Banking Regulation Act 1949 by this amendment. Yes, it is also a true statement. So what could be our answer? Answer is option number B, 2 and 3 only. ठीक है, बड़ा देखो आसान है. If we have learned the chapter of banking properly and understand the concept, so it's very easy for us to understand and answer it accordingly. Now moving on to question number 6. Indian government bond yields are influenced by which of the following? First is actions of the United Nations Federal Reserve, actions of the Reserve Bank of India, and then inflation and short-term interest rates. Select the correct answer using the code given below. Now this is again a very easy answer. It talks about the government bond market. As we all know, the government bond yields are dependent upon international factors, domestic factors, and also inflation. So the answer happens to be 1, 2, and 3. Option number D. Answer is correct. 1, 2, and 3. All three are correct. Next question for you. Dear students, consider the following. Foreign currency convertible bonds, foreign institutional investment with certain conditions, which is FII, then GDRs, global depository receipts, and then non-resident external deposits, NRI deposits, what we call them. Which of the above can be included in the FDI? भाई FDI में इनमें से किस किस को लिया जा सकता है? ठीक है, अब देखो इसमें से क्या क्या FDI का पार्ट हो सकता है. अगर आप चारों को देखो तो आपको दिखेगा कि 3 तो डेफिनेटली FDI का पार्ट नहीं है. तो हम कभी कभी एलिमिनेशन से भी जा सकते हैं. तो GDRs आर नॉट अ पार्ट ऑफ FDI. ठीक है, तो जिसमें 3 है वो आंसर हो नहीं सकता. तो ये आंसर है नहीं, ये आंसर है नहीं. तो बच जाता है 2 and 4 and 1 and 4. नाउ थिंक अबाउट दिस. क्या 2 and 4 आंसर होगा? क्या 1 and 4 आंसर होगा? नाउ दिस फर्स्ट, foreign currency convertible bonds. When we talk about foreign currency convertible bonds, that means it's not going to be invested back into the India, because it's not a direct investment that you are talking about, and that's why ये नहीं हो सकता. ठीक है ना, foreign currency convertible bonds नहीं हो सकता. तो फिर आंसर क्या बन जाता है? सिंपल आ जाता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो हमारे देश में होती है, एंड देन फाइनली नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स. तो आंसर इज 2 and 4. बड़ा सिंपल, एलिमिनेशन से भी चले जाए अगर करेंसी डायनामिक्स को ठीक से समझ गए तो. वी हैव सीन दैट चैप्टर इन आकार पैटर्न लेक्चर प्लान ऑन करेंसी डायनामिक्स. वी विल लुक एट इट इन दैट चैप्टर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू डियर स्टूडेंट्स. द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी is that it necessarily A. improves the competitiveness of the domestic exports in the foreign markets, B. increases the foreign value of domestic currency, and C. improves the trade balance. Which of the above statements are correct? Now it talks about the world trade especially. Now think about this. Devaluation of a currency, it is also related to the currency dynamics chapter. Whenever a currency is devalued, means what? The rupee to dollar value equation. Rupee loses, dollar gains. Rupee loses, dollar gains. Now what does it encumbers? It encumbers the first issue. Improves the competitiveness of the domestic exports in the foreign markets. क्योंकि डॉलर की तुलना में रुपी सस्ता हो जाता है, तो जो फॉरेन इंपोर्टर्स होते हैं जो हमसे इंपोर्ट करेंगे, मतलब हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे, उनके लिए भारत की गुड्स सस्ती हो जाएगी. मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में कंपिटिटिव एज मिल जाएगी. क्या दूसरा होता है? इंक्रीजेस द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. नहीं, ये तो नहीं होता, इसका कोई रिलेशन नहीं है. आपके एक्सपोर्ट का वैल्यू भले ही बढ़े, लेकिन हमारी करेंसी का फॉरेन वैल्यू बढ़ने का कोई मतलब नहीं, रादर वो तो कम हो रहा है ना, डॉलर गेट स्ट्रेंथन. तो ये तो है नहीं. देन थर्ड, इंप्रूव्स द ट्रेड बैलेंस. नो, देयर इज नो गारंटी एज सच, बिकॉज ट्रेड बैलेंस हैज टू डू विद मेनी अदर थिंग्स एज वेल. इट्स नॉट जस्ट द competitive edge that you are getting in a particular market. So it's not done. So answer is only 1. बड़ा आसान है. देखो, ट्रेड के कंसेप्ट समझ लो, करेंसी के कंसेप्ट समझ लो. It's very easy for us to answer it in prelims. Otherwise it would have been very horrible. It could have been nightmarish. आप आंसर नहीं कर पाते उसको. Question number 9, dear students. Which one of the following effects of creation of black money in India has been the main cause of worry to the development government of India? भारत में काले धन की के सृजन से भारत सरकार को सबसे बड़ी हेडेक कौन सी होती? ये सवाल पूछा गया है आपसे, है ना. तो देखो क्या हेडेक है.
पहला तो सबसे बड़ा डर क्या है भारत सरकार का, डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग। भी लोग काले पैसों से रियल एस्टेट में पैसा डालेंगे और अच्छे अच्छे लग्जरी मकान खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, क्या ये डर है? दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रेशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, गोल्ड। भी लोग ये खरीदेंगे, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट डालेंगे, गोल्ड खरीदेंगे, क्या ये डर है? तीसरा, लार्ज डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म। ये तो डर हो ही नहीं सकता क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज विल बी ग्लैडेड इफ दे गेट मोर नंबर ऑफ डोनेशंस। ऑफ कोर्स लीगली स्पीकिंग इट्स नॉट गुड बिकॉज इट्स अ ब्लैक मनी अदरवाइज। क्या ये डर है? तो ये तो है नहीं डेफिनेटली, तो 3 बच जाते हैं हमारे लिए। लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन। अब इसमें क्या पूछा है, सबसे ज्यादा सरकार की कॉज ऑफ वरी क्या हो सकती है? क्या पहली वाली वरी है? सबसे ज्यादा तो नहीं लगती पहली वाली वरी, हाँ ये जरूर हो सकता है, बट ये क्योंकि एसेट दिख जाता है तो ये सबसे बड़ी वरी नहीं है। क्या दूसरी वाली लगती है? ये भी नहीं लगती क्योंकि काला पैसा है, इस एसेट में दिखा देंगे तो परेशानी हो जाएगी। ये जो आखिरी वाली वरी है ये सबसे ज्यादा कॉज ऑफ वरी है, विच इज स्टेट एक्सचेकर को होने वाला लॉस ड्यू टू टैक्स इवेजन, बिकॉज ब्लैक मनी हैज एन इंटेंशनल ब्लैकनेस, दैट मीन्स इट वाज इंटेंशनली मॉडिफाइड टू इवेड द टैक्स इन द कंट्री। ये परेशानी है सरकार की। देखो बड़ा आसान है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following is likely to be the most inflationary in its effect? महंगाई में सबसे, देखो कहीं पे इन्होंने प्रीलिम्स में इन्फ्लेशन का चैप्टर दिया नहीं है, but they have asked you a question on inflation. They haven't talked anywhere about currency in your prelims syllabus, but they have asked questions more than twice now on currency aspects in prelims. So think about this. इसीलिए राउडी राठौड़ बोला था उसको। Which one of the following is likely to be the most inflationary? Think about this. Repayment of public debt, क्या ये हो सकता है? दूसरा, borrowing from the public to finance a budget deficit, क्या ये हो सकता है? तीसरा, borrowing from the banks to finance a budget deficit, and चौथा, creation of new money to finance a budget deficit. इनमें से सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन में कौन रिजल्ट करेगा, मतलब इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन हो सकता है? अगर आप पहले, दूसरे और तीसरे को देखो और उसको कंपेयर करो चौथे के साथ तो आपको पता चलता है आंसर इज द फोर्थ वन। सबसे ज्यादा बजट डेफिसिट फाइनेंस को कर्व करने के लिए जो आप मनी नया क्रिएट करते हो, प्रिंटिंग मनी, इससे ज्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हो सकते हैं बिकॉज सिंपली ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी स्टॉक विच इज गेटिंग इंक्रीज इन द इकोनॉमी, सो इट विल हैव अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो कोई ये बिल्कुल कोर कंसेप्ट है, एक बार समझ में आ जाए बाकी तीनों की तरफ देखोगे भी नहीं, आप इसको आंसर कर दोगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इकोनॉमी का मनी मल्टीप्लायर किससे इंक्रीज होता है? First, increase in the CRR in the bank's cash reserve ratio. Second, increase in the SLR in the bank's statutory liquidity ratio. Increase in the banking habit of the people and increase in the population of the country. Now, on a plain side of it, ये चौथा वाला तो बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि ये इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो मनी मल्टीप्लायर, रादर मनी मल्टीप्लायर कम होगा पॉपुलेशन से, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ये तो आंसर में नहीं है। तो बचे 3, इनमें से आंसर है सी, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, क्योंकि इफ only when people have more banking habitual, they will keep on money in their bank accounts, they will start using money as parsimoniously as they could, they will gain benefits from the banks in terms of investments, interests, etc. So that is money multiplier effect, which is important. ठीक है? Now the next question on your screen, question number 12, with reference to Indian economy, demand pull inflation can be caused or increased by which of the following? डिमांड पुल इन्फ्लेशन किससे हो सकता है? इनमें से पहला है एक्सपांशनरी पॉलिसी, दूसरा है फिस्कल स्टिमुलस, तीसरा है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, चौथा हायर परचेजिंग पावर है और पांचवा राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स है। भाई इनमें से कोड आपको चुनना है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन किससे ज्यादा हो सकता है? भाई पहले से हो सकता है कि आंसर इज यस, इससे तो हो सकता है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, जो अभी बताया, द मनी स्टॉक इंक्रीजेस हेंस द डिमांड इंक्रीजेस। फिस्कल स्टिमुलस, when the government gives you a fiscal stimulus, it infuses money into the economy. Yes, there can be a rise in demand. So second is also true. Inflation indexing have no relation to this. So it has got nothing to do with this. Then higher purchasing power, definitely when people's purchasing power becomes higher, people start demanding more and hence it could be demand pull inflation. Rising interest rate, no, it is ultra-virus. Rising inflation could tame the demand. It could not increase the demand. And that is the reason why it's not the answer. So the answer happens to be 1, 2 and 4. So the, yes, option number 1 is here. ठीक है? देखो कितने आसानी से आपने कर लिया। डिमांड सप्लाई के
डायनामिक्स को समझ लो. इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट आई यूज्ड टू टीच, बेसिक कंसेप्ट, हम डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट को समझते हैं. ठीक है. सो आगे चलते. क्वेश्चन नंबर 13. With reference to India, consider the following statements. Retail investors through demat account can invest in treasury bills and government of India debt bonds in primary markets. Second, the negotiated dealing system order matching is a government securities trading platform of the Reserve Bank of India. And third, the CDSL, Central Depository Services Limited, is jointly promoted by the RBI and the Bombay Stock Exchange. Which of the statements given above are correct? ठीक है. तो ये फैक्चुअल स्टेटमेंट्स है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है. देखो पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1 and 2. रट्टा लगा लो, काम खत्म. इसमें तो एनालिटिकल की कोई बात ही नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन है. देन क्वेश्चन नंबर 14. With reference to water credit, now this is a bit of an analytical one. Water credit, consider the following statements. It puts microfinance tools to work in the water and sanitation sector. Second, it is a global initiative launched under the aegis of the WHO and the World Bank. Third, it aims to enable the poor people to meet their water needs without depending on subsidies. Now, which of the statements given above are correct? To my mind, the second statement has nothing to do with this. So the statement number 1 and 3 are correct, and hence the answer happens to be 1 and 3, option number C, because the water credit topic talks about the microfinance in sanitation, and then it also talks about water access to poor people and their independence from subsidies. So it's a water credit aspect. ये current affairs का topic है भैया, आके गया है, and that's why the answer becomes very easy if you are a person updated with current affairs regarding economics. ठीक है, आगे चलते. The last question, dear students, for our discussion today is this. In India, the central bank's function is the lender of the last resort. Usually, it refers to which of the following? Lending to trade and industry bodies when they fail to borrow from other resources. Second, providing liquidity to the banks having a temporary crisis. And third, lending to governments to finance budgetary deficits. इनमें से किन चीजों पे लेंडर एज अ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे आरबीआई काम करता है, सेंट्रल बैंक काम करता है? अगर आप देखो, अगर पहले एस्पेक्ट की बात करो तो इस पे डेफिनेटली आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे काम नहीं करता. ठीक है ना, इस पे तो बिल्कुल काम नहीं करता. अगर आप देखो दूसरे पे तो इस पे जरूर काम करता है, क्योंकि रेपो विंडो, लिक्विडिटी विंडो ही इसी के लिए बनाई हुई है. एंड देन थर्ड इज lending to governments to finance budgetary deficits. No, the RBI doesn't lend the governments to finance budgetary deficits. For that, the government have different avenues to deal with those deficits. So again, this is untrue. So the answer is 2 only. So answer is B. देखो बड़ी आसानी से, if you have understood the concepts properly and if you have got a great command over means come pre aspect of the economy, अगर ये किया हो आपने, तो you are far better than the other contestants in answering both the questions of mains as well as prelims. So I think, my dear students, through our current discussion, it's being umpteenly now clear or aptly clear for you that means come pre has to be there, a collective endeavor has to be there, and how to go in this short endeavor. I have tried to make it aptly clear for you through discussing questions also, कि कैसे टॉपिक्स को लिंक किया जाता है क्वेश्चन से और कैसे यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है. Now, last but not the least, before leaving you now, I have to also tell you, I have told you what to do, what not to do, but I have to also tell you from where to do it. So these are few standard books and resources that I have recommended for you. Some of them you might have already known. So let's, for them, those who are new to this format, let's keep them abreast of this. You have to read NCRTs for class 9 to 12th of economics, class 9 to 12th. Otherwise, also for civil services, you must be reading NCRTs from class 6 to 12th. So it's better to read 9 to 12th economics. In 12th standard, we are having macro and microeconomics. More focus should be on macroeconomics. हमारा focus macro पे ज्यादा होना चाहिए. Micro का focus ज्यादा नहीं भी है तो it will suffice. पढ़ सकते हो पूरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मोर फोकस शुड बी ऑन मैक्रो एस्पेक्ट्स. सॉरी. दूसरा, वी हैव प्रिपेयर्ड थ्रू आकार फाउंडेशन a very meticulously designed notes format for you, so you can get it from Aakar Foundation also. So Aakar Foundation notes have been very
much handy for successful candidates across the years now. Then Indian Economy by Dutt and Sundaram. These are two textbooks which I have prescribed for you. Indian Economy by Dutt and Sundaram, latest edition. You could even take this one, or you could take Indian Economy by Mishra and Puri. इसमें से कोई भी एक ले लो तो चल जाएगा, कोई बात नहीं. Both are very, I would say, fat entities, so you could pick up at least one of them. Dutt and Sundaram, Indian Economy by Mishra, Puri. इनमें से कोई एक ले लो, but it should be, make sure that it is the latest updated edition. I think Dutt and Sundaram came with an updated edition. Mishra, Puri is yet to come by with that. Then Indian Economy Since Independence by Uma Kapila. It is, again, keep it an optional book. It's a very good book and only to be read by those people who are going to appear in the exam next year or next to next year, not 2022, not it's for 23 or 24. For those who are appearing in 22, don't try to read it unnecessarily. It will kill your time. Read it after prelims, fine with me. Then Indian Economy by Ramesh Singh, latest edition, as you all may be knowing it. एक टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद रमेश सिंह पढ़ो, ज्यादा बेटर रहेगा. हाँ, कभी कभी हो सकता है somebody would directly jump on to Ramesh Singh. I have no problems if you are finding your momentum and compatibility with the vocabulary of economics quite fine. ठीक है, आप डायरेक्टली भी वो पढ़ सकते हो. बट जिनके पास समय है, those who are appearing in 2023, 2024, they should better equip themselves with textbooks first. So it's a routine way. Then you have to read several magazines also. As you may be all knowing, योजना पब्लिकेशन डिवीजन का मैगजीन आता है, हिंदी में, अंग्रेजी में है, लोकल लैंग्वेज में भी आता है. मंथली वन मैगजीन आता है, बड़ा थिनर वर्जन है, 20-30 रुपीज का मिल जाता है, इसको ले लीजिए. देन कुरुक्षेत्र, स्पेशली फॉर रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स एक्सेट्रा के लिए, कुरुक्षेत्र के कुछ सिलेक्टिव इश्यूज, नॉट एंटायरली, ठीक है ना, इंफॉर्मेटिव होता है, काफी अच्छे आर्टिकल्स आते हैं. कुरुक्षेत्र इज वन मैगजीन, अगेन पब्लिकेशन डिवीजन है. देन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, कीप दिस इज एन ऑप्शन, ठीक है ना. इफ यू फाइंड टाइम, इफ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम which you perhaps may not have while preparing for civil service, then go through EPW, otherwise don't go through, just I have enlisted it. Then newspapers, now this is the compulsion, इसके बारे में आपको बिल्कुल कंपल्शन है, इसमें कोई आनाकानी नहीं होनी चाहिए. Newspapers, the Hindu and the Indian Express daily, you have to make a club of both of them. Especially for economics, read their business pages, read the explained page in the Indian Express daily, so that it could give you an insight into what's happening around you economically. So this much is what you have to do for the current affairs factor, magazines and papers for current affairs, and this is for the static stuff. ये जो static stuff है आपका, जिसको हम dynamic stuff बोले, ये तो current affairs वाला है, and then static stuff जो आपका routine वाला है, उसके लिए आपको ये किताबें पढ़नी है. From here, dear students, you could better prepare. In 4 to 5 months, you could well plan and prepare for this subject, and also adequately practice for prelims or mains in whichever stage you found yourself into. Those who are going to appear for this year's prelims, they must better focus upon MCQ practice, directly reading Indian Economy by Ramesh Singh if it is possible for you, no problem. You must be almost reading newspapers daily. If you are not, as early as possible, start reading them. Comprehending them is only after that which comes. So this is it for today. I think this extensive discussion, which have tested your patience also. So I'm quite indebted to you for having heard me this much extensively. For this discussion, I think it will come in handy for you. It is fruitful for all of us. I have tried my best through Aakar Foundation. It's always our endeavor to give to our students an honest attempt, an honest stuff, which could come in handy for them as a guideline, or whatever you may would like to call it. आपके एग्जाम के एंडेवर में आपको मददगार साबित होने की हमारी एक बहुत ही ऑनेस्ट कोशिश है, और इस कोशिश के थ्रू आज मैं आपसे लिंक हुआ, आपने मुझे सुन लिया. मेरे ख्याल आपको एक बहुत ही अच्छा हेल्दी आइडिया आ चुका होगा कि किस तरह से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. All is that what I have told you. This could be of great help to you, I wish, and from Aakar Foundation we all wish like that. So मेरे ख्याल आज हमें यहाँ पे रुकना चाहिए. Thank you very much. Do take great care of yourselves, and from Aakar Foundation and myself, it's a great wish for your future. A very best of luck for all your future endeavors.
Thank you very much. Thank you all. Do also follow one request. Do also follow our channel, subscribe it. And if you like, do comment and do give us your feedback as well, so that it could only enrich us to serve you better in the future. Thank you very much.